Assalamu alaikum and welcome to the quarter-final number 3. It's the toss time here at Locktipora's wonderful cricket stadium. I get the man who mattered the most this afternoon alongside me. To the left of me, I got Arshid, the curator of this turf. Then we got the famous entertainer, the famous soul of the valley. This is John Saab for you. Then we have the chief organizer, Mr. Amir Ganai. Moving on, we have the owner of Designing Dreams, Mir Bazaar, near NH44. Then we have Zaid Lefty, such a wonderful cricketer. And moving on, we have the legendary Nadeem Dar here in the frame. It's time for the coin to go up in the air. Here is the call. It's tail. It's come out as tail. So Zaid, you won the toss. आपने टॉस जीता, क्या करना चाहेंगे पहले और क्यों करना चाहेंगे? हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, अपोजिशन को कम से कम टारगेट पर रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चेज के बारे में सभी कहते हैं कि यहाँ चेज आसान होता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि चेज में टीम फंसती भी नजर आई है। किस तरह आपने अपनी कॉम्बिनेशन बनाई है और क्या रणनीति लेकर आप इस मुकाबले में उतरेंगे? विकेट काफ़ी अच्छा है आज, तो चेज़ करना मतलब ठीक रहेगा आज, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, गीला नहीं है, तो चेज़ इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन जो है 7-8 तक बहुत अच्छी है। सेम टीम खिला रहे हैं फिर कोई चेंज आज के मैच में? नहीं, 1-2 चेंज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे हैं आज। विकेट को देखकर आपने ये फैसला लिया या फिर ऐसे ही आपने कहा कि नहीं चलिए ट्राई करते हैं? विकेट को देखकर ही फैसला लिया आज, क्योंकि विकेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा है भी, क्योंकि 240 हो रहा है, 250 हो रहा है, तो विकेट काफ़ी अच्छा है आज। चलिए जायद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेम। कप्तान हमारे साथ है वैली स्टार्स के नदीम। टॉस आपके पाले में नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से कल आदिल कासर ने कहा कि ये जो क्वार्टर फाइनल से प्रेशर गेम होता है, पहले रन बनाएंगे, आपको मौका मिला है, किस तरह देखेंगे? कॉमन सेंस, सही बात है, पहले बैटिंग करेंगे, अच्छा टारगेट सेट करेंगे बस। कैसी कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं आज के मैच में? सेम ही कॉम्बिनेशन है, बस मंजूर भाई ने अब वापसी की है, बाकी वही सेम कॉम्बिनेशन रहेगा। चलिए जाते जाते इस पिच के बारे में आपके 1-2 अल्फाज। टॉप विकेट बनाई है, बैटिंग फ्रेंडली है, ऐसे ही T20 में हमें देखने को मिलना चाहिए और मिल रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है हमारे लिए। Best of luck for the game. Captain of Valley Stars Ganderbal. The news from the Sun is toss won by Designing Dreams, Zaid Lefty, and he decided to bowl first here in this all-important quarterfinal number 3. You can see on the backyard, that's a beautiful turf for you guys. Ready to roar, and let's see who's going to deliver the punch and counterpunch. We shall be back with the live action in a while from now. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.
asking Nadeem Dar to bat first, and Valley Stars are going to bat. And their two openers are out in the middle. And on the other side, if we talk of team Designing Dreams, they're dispersed out. Their owner is here. This is Designing Dreams, Mir Bazar, near NH 44. One of the famous places in South Kashmir. That is the Mir Bazar. And it is Valley Stars taking on Designing Dreams. Quarterfinal number 3. Everything is in readiness. All set. And we are short while away from ball number 1. The third quarterfinal here at the Sunday. Look at the backyard. In the backdrop, such a beautiful scene. And it's the beauty of cameraman showing us that angle and that picture. Such a picturesque with lofty sky-touching trees and clouds in between. Wow, makes it a magnificent sight and scene. Thanks to the likes of Designing Dreams as well as Valley Stars, as we're here for quarterfinal number 3. Tomorrow we have a single quarterfinal coming up. That's going to be Kamal Tigers taking on Cyber Strikers. And then we have the semi-finals lined up, and the final isn't that far away. And we have a big tournament coming up, All India T20 Locktipora, where all the teams, all 16 teams can come up from any part of the country. It's a 16-team tournament, and that's going to be a special one, day-night tournament, the biggest one coming up. Here is the ball one. Suil on its axis, dancing on its axis, and works it away onto the onside. He's off the mark, underway. Valley Stars are 1 for none in the very first over of quarterfinal number 3. This is KIS Unstoppable, bringing you the live broadcast. Moreover, you can htxṣtps State Supports Live way to find out the Fizzlet campaign here at the center of Locktipora.
the second over in, and Zaid has got the ball in his hand to operate. Once again, a good size here to witness the game. Good crowd in to witness the quarterfinal number 3, second one for today. Taksit will pick up a single, and the two batters in the middle trying to take time. They have all the 20 overs to face and put on a show from their allotted 20 overs. Let's see. It looks like that they're going to bat sensibly here. They're not going to take any risk. There is a message from the dugout straight away for Guldan as well as htxtps. Find the ball properly. Looks like. Otherwise, they don't wait for too much. But that's a quality shot. That's a beautiful shot of the bat of Adil Guldan. He breaks free using the restriction to perfection. He knows that restrictions are on and applying at the Magavar. Malla walks up to Zaid lefty. Zaid has that experience and knack of picking wickets, breaking stands. Likewise, he walks up to him and having a word with his bowler Zaid lefty there. He's a right arm pacer and the left and bats with the left hand. He's bowling with the right arm. And like that of Umar lefty, he bats with the left hand and the bowls with the right hand. The right arm medium fast and the left hand batter. Again, a great prospect for his team, and that shot of the bat of Adil Guldan. When he gets going, it's treat to watch. Oh, look at that shot. Where is this one going? Is he in danger? No, doesn't. That's gonna be runs. Second boundary. Driven that one straight. Upish. And down to the long off for 4. A nice show, pickup shot. My colleague telling me, look at that shot. Oh, beautifully done. He's got that wonderful swing of the arms there. Dig out nicely. Blocked it. Jammed it to cover not for runs. It's 15 without loss. We're in the second over of the game. Putting into bat. Oh, look at that shot. Elegance. Spectacular one. That's Guldan for you. The cricketing dawn is in the middle. Once again, admirable stuff. Where is this one going? That's outward as they cover an extra cover for 4. 19-20 over number 2. After being put into bat, I got Nadeem and Latif in the com box. We start with Latif here. Latif, welcome to the com box. धन्यवाद मुनव्वर। तो स्वागत करना चाहूंगा मैं तमाम श्रोताओं का 19 बगैर किसी नुकसान। दूसरा ओवर पारी का मुकम्मल। आदिल गुलडान 6 गेंदों का सामना किया। बेहतरीन 2 स्ट्रोक्स फ्रंट फुट पर आकर बड़े नजाकत भरे शॉट्स गुलडान के बल्ले से लगे। ये आप देख सकते हैं, कमाल का शॉट फ्रंट फुट पर आए, गेंद की पिच तक पहुंचे और इनसाइड आउट स्ट्रोक और गेंद एक बाउंस के साथ सीमा पार कर गई। कमाल का चौका आदिल गुलडान के बल्ले से। आदिल गुलडान 14 पे htxtps 6 गेंदों का सामना किया, 5वें नाबाद, 19 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। हसनैन पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर क्यों निकलते हुए अक्रॉस द लाइन htxtps जरूर आए थे, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे बीट हुए। ऑल इंडिया T20 कप लक्टिपोरा जो कि अगस्त के महीने में शुरू होने वाला है, 15 अगस्त उसकी शुरुआत होगी, उसकी बिगिनिंग होगी, उसका इनॉग्रल मुकाबला होगा। लक्टिपोरा के स्वतंत्र दिन जब होगा, इंडिपेंडेंस डे जब होगा, तो उसी दिन शायद उसका इनॉग्रल मुकाबला भी होगा, उसका उद्घाटन भी होगा और शुरुआत बिगिनिंग उसकी होगी। नदीम, लतीफ भाई, जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र दिवस और साथ में गणतंत्र दिवस, ये 2 दिन होते हैं। तो हमारे पास इस समय जो आन करीब पहुंचने वाला है वो है स्वतंत्र दिवस, और उस दिन के मौके पर ये ऑल इंडिया T20 चैंपियनशिप का आगाज होगा यहाँ। जहाँ बिल्कुल लाल एक और गेंद देकर शॉट अप लेंगे गेंद htxtps के लिए, लेकिन ठीक ठाक ढंग से गेंद बल्ले पे नहीं आई, बल्कि टॉस से गेंद जाके टकराई, टकराने के बाद काफी लंबे समय तक हवा में थी।
दो फील्डर्स के बीच में से काफी दूर जाके गिरी खाली क्षेत्र में, 1 रन और इस 1 रन के साथ इक्कीस बगैर किसी नुकसान के 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद आदिल गुल्डान 14, इश्तियाक रॉबी 6, अजनैन गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.2 ओवर की गेंदबाजी, कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी हुई है अभी तक। अगर हम बात करेंगे यहाँ से डिजाइनिंग ड्रीम्स के गेंदबाजों की तरफ से ज्यादा मौका नहीं दिया गया, हालांकि जो स्ट्रोक्स लगे आदिल गुल्डान के बल्ले से वो बिल्कुल क्लास उनमें लिखा था। अगली गेंद इश्तियाक रॉबी के लिए फ्लैट, बैंग बैंग, आदिल गुल्डान के बल्ले से ये शॉट आया फ्रंट फुट पे निकल के। इससे पूर्व में बेहतरीन 2 स्ट्रोक्स खेले थे पिछले ओवर में, इस ओवर में भी कमाल का शॉट, गजब का, कमाल का छक्का, बेहतरीन उम्दा छक्का और बेहतरीन शॉट, काफी बक स्टाइल, और जिसे मनोवा लगातार कहते हैं बेस्ट क्रिकेटिंग स्ट्रोक अगर कहा जाए तो गलत नहीं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर काफी रूम मिला, खूबसूरती के साथ गेंद को डीप पॉइंट क्षेत्र में निकाला उस ओवर फील्डर। लेकिन इससे पूर्व जो स्ट्रोक आदिल गुल्डान ने लिया वो कमाल का शॉट था। हालांकि ऑन साइड का क्षेत्र इनका काफी मजबूत रहता है, ऑन साइड में काफी बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन आज स्वीपर कवर का जो क्षेत्र उन्होंने टारगेट किया वहां पे लगातार स्ट्रोक्स लगाते हुए आदिल गुल्डान 28 बगैर किसी नुकसान के। इश्तियाक रॉबी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, 6 रन बना, 8 गेंदों का सामना किया, बेहतरीन साझेदारी और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे होते हुए, कट किया जोरदार तरीके से, हल्का सा फंबल लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, शॉट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। 3 रन अपने टीम के लिए बचा है वहां पे फील्डर ने, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा आदिल गुल्डान, और उसके साथ साथ इश्तियाक रॉबी को 29 टीम की कुल रन से किया 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी तक अगर हम बात करेंगे टॉस की, टॉस जीता यहाँ पे डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम के कप्तान जाहिर लेफ्टी ने, और उन्हें पहले फील्डिंग करने पर तरजीह थी और आमंत्रण किया गया, न्योता मिला यहाँ पे विपक्षी टीम को यानी वैली स्टार्स गांदरबल को कि वो बल्लेबाजी करे तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ गुल्डान के बल्ले से एक और छक्का, कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट गुल्डान के बल्ले से, फ्रंट फुट पर आए, लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे, रिस्ट का बढ़िया, ये आप देख सकते कमाल का रिस्ट का बढ़िया उपयोग करते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से आदिल गुल्डान ने पहुंचा दिया 6 रनों के लिए, फ्रंट फुट पे निकल के, कमाल का शॉट, गजब का स्ट्रोक यहाँ पे आदिल गुल्डान के बल्ले से, डेलीकेसी, नजाकत बड़ा शॉट आदिल गुल्डान का। आदिल गुल्डान फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आकर्षक पारी के लिए आदिल गुल्डान को जाना जाता है और यहाँ पे अभी तक 1 सैकड़ा उनके नाम है, और कमाल की पारी, उम्दा पारी यहाँ पे खेलते हुए आदिल गुल्डान, और इसी पारी के लिए जाने जाते हैं इश्तियाक रॉबी और आदिल गुल्डान। हालांकि इश्तियाक रॉबी का बल्ला फिलहाल खामोश नजर आ, लेकिन आदिल गुल्डान का बल्ला माशाल्लाह आगो गलता हुआ लक्टीपोरा के इस खूबसूरत मैदान पे धमाकेदार बल्लेबाजी, और पूरी तरह से गेंदबाजों की लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे खिलवाड़ करते हुए आदिल गुल्डान। 3 ओवर की समाप्ति, 35 रन बगैर किसी नुकसान के। आदिल गुल्डान अगर पहले पावर प्ले के 6 ओवर निकालते हैं क्रीज पे तो मुझे लग रहा है यहाँ से 100 से अधिक रन बन सकते हैं पावर प्ले में, क्योंकि जिस शैली के ये बल्लेबाज है, जिस तरह से अब वो सकारात्मक सोच के साथ मैदान पे उतरे, ऐसा बिल्कुल प्रतीत है कि बड़ा स्कोर जो है पावर प्ले में बन सकता है। अगली गेंद शायद वहां पे थाई से टकराने के बाद ऑन साइड की ओर चली गई, शॉट फाइल लेग क्षेत्र में 1 रन और इश्तियाक रॉबी ने हालांकि ये स्ट्रोक लेना चाहा लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, 1 रन और जोड़ते हुए स्कोर में वैली स्टार्स गांदरबल के 36 बगैर किसी नुकसान के, आदिल गुल्डान 27 पे 9 गेंदों का सामना करने के बाद, और वहीं पे इश्तियाक रॉबी जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 10 गेंदों का सामने के साथ में नाबाद, बेहतरीन वातावरण, बेहतरीन वेजवारस लक्टीपुरा के मैदान पे। और तापमान की बात करेंगे, बेहतरीन तापमान है, तकरीबन 35 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पे चलता हुआ, बेहतरीन वातावरण, क्रिकेट का रफोल, बेहतरीन मौसम। अगली गेंद को खिला आदिल गुल्डान ने, दूसरे रन की मांग नहीं है, किसी संतुष्ट होना पड़ेगा, बैकफुट पे जाके तिरछा बल्ला करते हुए गेंद को गाइड किया था, शॉट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में उस और फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड तो किया, नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को 1 रन चुराने से। इस 1 रन के साथ 37 बगैर किसी नुकसान के 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद इश्तियाक रॉबी सामने अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। जाहिद लेफ्टी टीम के कप्तान आए
ऑन साइड में गेंद को मोड़ा जरूर, एक पैर हवा में, दूसरे पैर पे संतुलन बनाए रखा, लेकिन गेंद को ठीक ठाक ढंग से प्लेस नहीं कर पाए इश्तियाक रॉबी। सीधे खेल बैठे शॉट फाइन लेके फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। 30 गज दायरे के अंदर इस गेंद पर कोई रन नहीं। 37.3 के बाद अच्छी बेहतरीन उम्दा सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करने होगी जाहिर लेफ्टी को। अगर यहां से इश्तियाक रॉबी या आदिल गुलडान की विकेट शुरुआत पे मिलती है तो फिर बेहतर रहेगा और रनों पे भी अंकुश लग सकता है। अगली गेंद इश्तियाक रॉबी, हालांकि दूरी मन से बल्ला चला रहे हैं, उस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी इश्तियाक रॉबी नहीं कर पा रहे हैं। गेंदें आसानी के साथ उनके बल्ले पे लग नहीं रहे। आदिल गुलडान वहां पे दूसरे छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आकर्षक पारी खेलते हुए, आग उगलती हुई उनकी बल्लेबाजी लक्टीपोरा के मैदान पे। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग लक्टीपोरा एडिशन सेकंड का, और 2 मुकाबले अभी तक हुए हैं क्वार्टर फाइनल के। पहला मुकाबला वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के नाम, और दूसरा मुकाबला जो दिन का पहला था सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने यहां पे हराया अल्फला कोलचीन की टीम को। जोरदार अपील पैरों पे लगी, आदिल गुलजान के विरुद्ध शफल जरूर किया था, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे खेल नहीं पाए। गेंद धीमी गति से भी आई, नीचे भी रही, बल बचे। जाहिर लेफ्ट ने यहाँ पे जरूर यहाँ पे प्रयास किया था आदिल गुलडान को फंसाया जाए और लेग बिफोर विकेट यहाँ पे मिले। कमाल की गेंद जाहिर लेफ्टी की, चतुराई भरी गेंद नीचे रही और ऑन साइड में खेलना चाहते थे, शायद वहां पे गेंद भल्ले पे लगी, उसके बाद पैरों पे जाके संभवतः टकराई। प्रश्न जरूर पूछा था लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, संभवतः विश्वास कम था और अंपायर ने स्ट्रेट अवे इस अपील को नकारा। जोरदार अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर टच से मार्क्स नहीं हुआ, अपनी जगह से हिले भी नहीं। इस बार लीडिंग एज और किस्मत बहादुरों का साथ देती हुई नजर आ रहा। आदिल गुलडान खुल के स्ट्रोक्स लगाते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल और प्रयास कर रहे थे कि डीप मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला जाए। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एज वहां पे जरूर लगा, प्रयास बढ़िया फर्स्ट स्लिप के फील्डर द्वारा पंजू के बल उछलते हुए इस कैच को लपकने का प्रयास था लेकिन लपक नहीं पाए। और इस तरीके से यहाँ पे गुलडान बाल बचे, काफी ऊपर थी गेंद, काफी मुश्किल था फील्डर के लिए इस कैच को लपकना, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन फिलहाल बेहतर जाता हुआ वैली स्टार्स गंदरबल की टीम के लिए। Designing dreams this afternoon, winning the toss and fielding first, continues to be field first in the quarterfinals. All the 3 quarterfinals, captains winning the toss and bowling first. And it has not worked for them, for all the 2 captains so far, deciding to field first. They have lost both, and now here VSG in front. A vital cog in the wheel, Adil Guldan. He has been explosive run scorer for VSG. This time, loud appeal again. This time the finger goes up. And Ishtiaq Robbie has to walk back. He treads back. He was not getting the feel of the ball in the middle. 14 deliveries for his mere 7 runs. And now he walks back. Danish is the man taking that catch behind the wickets. And I was just talking about the opening pairs in this competition so far. Ishtiaq Robbie, Adil Guldan, absolutely on the top there. But talking about Asim Bashir and
Wasim Kotru, I think that's the best. Another one that comes to my mind. Umar Watson, Abid Nabi, Panchal Warriors. Dismal show for them yesterday in the quarter final number first. And now, here you go. Designing Dreams, punching one below back. Huge wicket this of Ishtiaq Robbie, although he couldn't get going this afternoon. But the coloss of the man remains. Mujibul Haq, man of the match performance in the last game that he played. And now here he is back because he has been the wicket taker for Designing Dreams for them in this tournament. Yet again, he does that, weaves the magic and picks up the wicket of Ishtiaq Robbie there. He has to restart Mujib. Adil Guldan is going absolute great guns. He starts well, picks it up and hits it towards the deep mid-wicket region. First ball, boundary for Mujibul Haq. He is off the mark in style. That is the mindset and attitude of the big teams. Even if you lose wickets, they will still go after you. And this top order, be it of VSG or Sultan Warriors Baramulla, they absolutely pack a punch. And packing the punch is Mujibul Haq. Look at that in the slot and sends it packing for 4. Wicket, second ball, followed by a 4 there. What will be the response from the bowler there? Because this time outside the off stump, again wanted to cut the ball, not to be, beats him. Good comeback this. Is he getting some turn? Usually in the second match of the day, it does turn a bit. And it will be heartening to see if bowlers get some respite at the end of the day. Remember, this is a road of a pitch, as Munawar will tell. And this is up, Pishli, and it has been dropped. Would you believe that he was in control of the game for a good chunk of time, but not to be? He drops it. And that is exactly what Designing Dreams are lacking. The field has been absolutely dismal for them in this competition. They have dropped lots of catches. And one more go down. You cannot drop Mujib and Co. Oh, he makes a mess of it. Look at that. He had it for a moment, but not to be at the end. This drop catch is going to hurt them. No turn. Getting the outer splice and almost having him there. We will have a change in ball and we will take a breather. All India Champions League starting here at Locktipora ground on 15th of August. You heard them say. And the league is going to be, it will bring a different flavor in the valley. Teams from different states are going to take part, and it will be exciting to see how the things pan out. Are we going to see a change in ball there? Absolute scorching heat out there. Not easy for the umpires, not easy for the players. Even in Combox, we are feeling a bit of discomfort. And such are the conditions. Salman going with a ball box there. We'll wait for a moment. And Johnson, the entertainer, is here today. And he is doing his job pretty well, keeping the crowd engaged. And such a beautiful soul he is.
Ganderbal looks like he is going to bowl the last over of the power play. Man of the match performance in that group stage match. They are here on the back of that performance, reaching the quarterfinals. And here he is again, the man with a golden arm. First look up Ganderbal and almost carries, but falls short at the end. Mujibul Haq is living dangerously, but more importantly, he is living VSG 48 for the loss of 1 wicket. We are in over number 6. And Ganderbal, as we are saying that he has a knack of picking up wickets. Nothing short about this one. What a shot. Brilliant one from Adil Guldan. Pitches it up, dishes it up. And Adil Guldan, too strong a player to miss out on a ball like this. He doesn't. Sends it backing for a 6. Adil Guldan this afternoon is looking in mood, in red hot form. Look at that. Full and bang you go. Pitches it up again. And Adil Guldan does it again. We will wait for the umpire signal this time. 1 bounce for. And a contender for that A-star bat. They are going very, very quickly from the industry of Feroz Ahmed. Already 1 in the kitty of Guldan. Can he make it to 14 deliveries, 42 runs? Next 3 deliveries, can he make 8? He has already taken that A-star bat. Can he take another one? A-star, the man Feroz Ahmed, the owner of A-star bats there, making sure, doing a phenomenal job. Oh, dot ball, some respite there for the bowler. After 2 boundaries, he bowls that dot ball. Can Adil Guldan hit a half century of 17 deliveries? He has to go bang bang here. Another dot and gone are the chances to win that A-star bat. No, the chances remain. He goes for it. He picks up 6. He is just too short of a magnificent half century. And he is just too short from 1 ball to get that A-star bat for him. He has already won, as I said. Wasim Kajru takes 1. Asim Bashir today takes 1. Adil Kajru has 1. Can Adil Guldan make it 2 out of 2? 1 delivery, 2 to get. And Ganderbal has the ball in hand. Oh, he takes him. Forget about a half century. Adil Guldan has to walk back agonizingly. And he is caught. He is caught by Danish there. And VSG lose their second. Designing Dreams are throwing punch. And they have picked up second. 64 for 2. Power play is done. What to you, Latif? बेहतरीन पावर प्ले जाता हुआ अगर आप बात करेंगे यहाँ से डिजाइनिंग ड्रीम्स के टीम के लिए, जिस प्रकार से इस विकेट को बनाया गया, गेंदे आसानी के साथ बल्ले पे आ रहे, रन आसानी के साथ यहाँ पे बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं दाद देना चाहूँगा। यहाँ पे बात करेंगे हम डिजाइनिंग ड्रीम्स के गेंदबाजों को जिन्होंने आज कमाल की गेंदबाजी की। अस्सलाम वालेकुम। गुलडान को फंसाया गया इस बार ऑफ स्टंप से बाहर है। टिबी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बड़े शॉट के लिए गए। गंडेरबल को मिली है ये विकेट और दूसरी विकेट यहाँ पे मिली डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को।
अच्छी गेंद थी और ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर भी थी। जानबूझ के शरीर से दूर रखे गेंद मजबूर किया आदिल गुलडान को कि वो शरीर से दूर बल्ला चलाए। बल्ले का बाहरी सिरा लेते हुए विकेट कीपर ने बेहतरीन प्रयास किया। धीमी गति से फेंकी हुई गेंद आदिल गुलडान का विकेट, एक बड़ी विकेट में समझता हूं यहां पे मिली है डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को और वीएसजी को लगने वाला ये दूसरा झटका वैली स्टार्स गांदरबल को। गेंदबाजी में शायद परिवर्तन होता हुआ। एक ओवर में गौहर मल्ला ने 17 रन दिए लेकिन एक विकेट उन्होंने निकाला। एक सफलता यहां पे दिलाई अपनी टीम को जिस विकेट की जरूरत थी आदिल गुलडान की। लगातार अलग सोच के साथ एक अच्छी रणनीति के साथ वो गुलडान को ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंदबाजी कर रहे थे, फंसाने का प्रयास था और उस रणनीति में उस सोच में फिलहाल वो कामयाब हुए। एक अच्छी सोच वहां पे आदिल गुलडान का आउट करने की गौहर मल्ला द्वारा। फिलहाल विकास आ रहे हैं फिर से एक ओवर डालने के लिए। एक ओवर की गेंदबाजी, 5 रन 1 विकेट अभी तक निकाला। अच्छा ओवर पहला गया। पहले गेंद लेकर इस बार फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड में। गौहर मल्ला शायद पीछे शॉर्ट कवर पे जब तक वो गेंद को उठाते थ्रू फेंकते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन और बटोरने का। तेजी के साथ आंखों में इशारा करते हुए 1 रन मुकम्मल की। शायद गेंद सीधे जाके कंधे से टकराई है। दानिश के कुछ पलों के लिए वहां पे मुकाबला रोका गया है क्योंकि थोड़ी सी चोटिल वहां पे हुए हैं। शायद कंधे से गेंद सीधे जाके टकराई। दानिश मुजफ्फर और उसके साथ साथ मुजीबुल हक के क्या नो बॉल का इशारा यहाँ पे किया जाएगा। फ्रंट फुट नो बॉल क्या और कुछ। पैंसठ टीम के रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पे 6.1 ओवर की समाप्ति के बाद दानिश मुजफ्फर गांदरबल से शायद ताल्लुक रखते वो बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे मैदान पे। 65 2 विकेटों के नुकसान पे 6.1 के बाद वीएसजी टॉस हार के पहली पारी में उनको न्योता दिया गया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। विकास 1.1 ओवर की गेंदबाजी 6 रन दिए। अगली गेंद लेकर इस बार ऑप्शन से बाहर दानिश माफ कीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल दानिश मुजफ्फर के लिए बैकफुट पे जाके हल्के से प्लेस किया गेंद को गली क्षेत्र में। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 2 गेंदें हो चुकी है। 65 2 विकेटों के नुकसान पे। विकास एक और गेंद लेकर इस बार फ्लाइटेड गेंद, फ्लाइट को स्वीकार किया। फ्रंट फुट पर हाफ वाले पे लेके ड्राइव किया सीधे बल्ले से। जाहिर लेफ्टी की और लॉन्ग ऑफ पे वो फील्डिंग कर रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास समय बड़े इत्मीनान के साथ 1 रन और मुकम्मल की। 1 रन के साथ 66 2 विकेटों के नुकसान पे 6.3 ओवर की समाप्ति के बाद वैली स्टार्स गांदरबल डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम के साथ भिड़ रही है इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर्स बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग। विकास द्वारा गेंद को अपने पीछे जाने नहीं दिया, बेहतरीन फील्डिंग। फॉलो थ्रू में इस गेंद पर कोई रन, दबाव बनाने का प्रयास वहां पे विकास द्वारा मुजीबुल हक के ऊपर जिनका कैच भी ड्रॉप हुआ ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा आता हुआ। काफी बाहर थी इस बार ऑफ स्टंप से। इस रन के साथ टीम के रन संख्या 67 पे पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पे 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पे चले गए। गेंद कहने की प्रतीक्षा की, ऑन साइड में गेंद को निकाला। 6.5 ओवर की समाप्ति के बाद 68 2 विकेटों के नुकसान पे 7वां ओवर पारी का चलता हुआ। 1 2 3 4 रन अभी तक इस ओवर से आए। दानिश मुजफ्फर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। यहां पे अंतिम गेंद का सामना कर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर इनसाइड आउट स्ट्रोक, एक बाउंस के साथ स्वीपर कवर सीमा रेखा से बाहर। दानिश लेफ्टी को गेंद छकाती हुई निकल गई। 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। फ्रंट फुट पर आकर लाजवाब टाइमिंग, दर्शनीय स्ट्रोक दानिश मुजफ्फर के बल्ले से। खूबसूरत स्ट्रोक। फ्लाइट जरूर दी थी, आमंत्रित किया गया था वहां पे बल्लेबाज को कि वो बाहर निकले। एक पैर बाहर निकाला, गेंद के पिच तक पहुंचे और पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, उम्दा गजब का शॉट इस बार दानिश मुजफ्फर के बल्ले से। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग गजब का और प्लेसमेंट लाजवाब।
हालांकि पीछे जरूर फील्डर थे जाहिर लेफ्टी लॉन्ग ऑफ पे, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, गेंद उनको चकमा देती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। छोटा कद है इनका लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी, अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास। मुजीबुल हक के पास जो कैच ड्रॉप हुआ है शॉट पॉइंट क्षेत्र में, मुझे लग रहा है उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को, क्योंकि एक गलती आपको इस मुकाबले से बाहर कर सकती है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, डू और डाई का मुकाबला। मुंतजिम बशीर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, जहां बिल्कुल बेहतरीन स्पिनर है। देखना होगा अगर आज उनका दिन रहा तो बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद को खेला है खूबसूरती के साथ अगेंस्ट द स्पिन, गेंद डीप स्क्वायर क्षेत्र में से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन की बढ़ोतरी, इस 1 रन के साथ टीम के रन संख्या 73 पे। दो विकेटों के नुकसान पे 7.1 के बाद अगले गेंद फ्लाइट गेंद थी, फ्लाइट को स्वीकार किया, एक बार बाहर निकाला खूबसूरती के साथ, गेंद को कॉर्पेट के सहारे निकाला वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। उस और फील्डर जब तक भी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन। और मुंतजिम बशीर किस प्रकार की गेंदबाजी करते, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उनके सामने स्ट्राइक लेने के लिए तैयार रहेंगे। मुजीबुल हक बेहतरीन स्पिनर, स्पिन के विरुद्ध अच्छा खेलते हैं, बेहतरीन फुटवर्क इनके पास। अगली गेंद को फिर से निकाला अगेंस्ट स्पिन, इस बार फिर से गेंद को खेला, गेंद डीप मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन और इस 1 रन के साथ 75, 2 विकेटों के नुकसान पे। और मुंतजिम बशीर के विरुद्ध जितना हो सके आप फुटवर्क का इस्तेमाल करके गेंद के पिच तक पहुंच के आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। यदि आप खड़े खड़े उनके विरुद्ध खेलोगे तो फिर मुश्किल होगा आपको, स्पिन होने नहीं देना यहाँ पे गेंद को। इस बार पैडल स्वीप के अंदाज में गेंद को निकालना चाहते थे, क्या गेंद बल्ले से लगी, अफवा पैडों से जाके टकराने के बाद काफी फाइन जा रही है, बल्ले से लगने के बाद गेंद चली गई काफी दूर डीप फाइन लेग क्षेत्र में, डीप लॉन्ग लेग क्षेत्र में 2 रनों के लिए। इन 2 रनों के साथ टीम के रन संख्या 77, 2 विकेटों के नुकसान पे। 7.4 ओवर की समाप्ति के बाद दानिश मुजफ्फर 8 पे, मुजीबुल हक 10 पे, दोहरे अंकों में वो पहुंचे। मुंतजिम बशीर अच्छा खासा टर्न और बाउंस यहाँ पे प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और गेंद डालने के लिए तैयार, बार ब्लिस्ट ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को टिप्पा खेला, गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को मोड़ा है, गेंद काफी दूर चली गई बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में, वहां से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन और जोड़ते हुए खाते में। इस 1 रन के साथ 79, 2 विकेटों के नुकसान पे 7.5 के बाद। तो आसार के पहली पारी में वैली स्टार्स गांदरबल की टीम इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग एडिशन सेकंड में फिलहाल बल्लेबाजी करे। अगली गेंद को फिर से स्टम्प्स को कवर किया, शफल किया, ऑन साइड में गेंद को मोड़ा, कल्लाइयों का उपयोग करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इस रन के साथ 81 टीम के रन से किया, 2 रन इस गेंद पर। अब जाके सईद श्वाब का इशारा आता हुआ 2 रन इस गेंद पर मिले हैं और इन 2 रनों के साथ 81, 2 विकेटों के नुकसान पे 8वां ओवर पारी का मुकम्मल। दानिश मुजफ्फर 12 और मुजीबुल हक 10 पे नाबाद है। 10 गेंदों का सामना करने के बाद मुंतजिम का कामयाब ओवर फिलहाल मुकम्मल हो चुका है। बेहतरीन विजुअल आप तक इक्यासी 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लेट कट किया, गेंद को अपनी ओर आने दिया, अंतिम क्षणों में गेंद को खेला है यहाँ पे आड़ा बल्ला करके गेंद शॉट गली क्षेत्र में चली गई, वहां से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन और 82, 2 विकेटों के नुकसान पे 8 के बाद 9वां ओवर पारी का वर्तमान स्थिति में चलता हुआ विकास। अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर, ड्राइव लाजवाब, उम्दा गजब का शॉट, फुल लेंगे ड्राइव डीप पॉइंट क्षेत्र में
वहां पे गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। लाजवाब कमाल की कवर ड्राइव दानिश मुजफ्फर की, खूबसूरत बेहतरीन टाइमिंग, गेंद की पिच तक आए और लाजवाब टाइमिंग और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। बेहतरीन शॉट, फुल लेग ड्राइव अपने दाहिनी ओर लगाई थी, वहां पे फील्डर ने गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। गेंद 4 रनों के लिए सीमा पार। अगली गेंद लेकर इस बार आउट साइड में गेंद को निकाला। गेंद वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में चली गई। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ दानिश मुजफ्फर पहुंचे 17 पे। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 87, 2 विकेटों के नुकसान पे। मुजीबुल हक 11 पे, 11 गेंदों का सामना करने के बाद विकास 4, 1-1 यानी कुल मिलाकर 2 सिंगल्स और 1 चौका अभी तक इस ओवर में आया। अगली गेंद लेकर इस बार खूबसूरती के साथ ऑन साइड में गेंद को उठाया, कैच वहां पे लपकने का भरपूर प्रयास डीप मिड विकेट क्षेत्र में। हालांकि पंजू के बल उछले जरूर वहां पे फील्डर, फ्लैट छक्का। ये आप देख सकते हैं स्लो के अंदाज में गेंद को, और यहां पे भरपूर प्रयास किया गया फील्डर द्वारा। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, बढ़िया प्रयास, खूबसूरत स्ट्रोक और लाजवाब प्रयास वहां पे फील्डर द्वारा, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। 1 रन और जोड़ते हुए खाते में 93, 2 विकेटों के नुकसान पे 8.5 के बाद फिलहाल 94 पे पहुंचा है। 2 विकेटों के नुकसान पे 8.5 के बाद 90 ओवर पारी का चलता हुआ विकास। ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला जाता हुआ, सीधी ज्यादा टर्न और बाउंस इस ओवर में देखने को, सीधी गेंदबाजी कर रहे। इस बार फिर से एक पैर बाहर निकाला ऑन साइड में, फ्रंट बोर्ड पर आकर गेंद को निकाला डीप मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 9 के बाद 95, 2 विकेटों के नुकसान पे आदिल गुलजान और इश्तियाक इलाही रॉपी वापस लौट गए। Thank you, Latif. Going through that shot again and again. Coming off the bat of Valley's very mature Timber Bavuma. Looking at his size, not much. But that was a closer, that was a great shot. First signs of intent from Mujibul Haq. The boy coming from Budgam all the way to Locktipora. He's on 18 of 13. It's 18 apiece. Danish Muzaffar and Mujibul Haq. 2 for 95 after 9 overs with 11 to go. 66 balls are going to come. So I believe that they will be looking forward to 200 plus here. And out of 2 quarterfinals, we have seen that team batting first winning the game comprehensively, comfortably. And what is in store? What will happen here? This is the 3rd quarterfinal. It is Muntazim Bashir to ball. First over, none for 9. The second over is here. Starts off with a wide delivery down the leg side. He's bowling onto the pad line. Even in the first over, we saw that. Couple of wide is there. A wide to start with here. Got to mend his lines as a bowler. As I mentioned, he can be handy. He's one of the top-notch spinners in the Valley. I still remember he used it to represent what could have been a brilliant catch, but can't plug that one. Nobody's happy with the man in the deep there around that Kokana area. What could have been absolute blinder. And it reminds me, he was playing for Dedu Rangers Kashmir, Muntazim Bashir, for a couple of years as he worked as a man weapon. He was a key member of that team and is welcomed with a mighty 6 by Danish Muzaffar, who moves to 24 of his 11. Good looking shot onto the offside. Quality shot. Danish Muzaffar with that single moves to 25. There is addition to the tally. It's 103 for 2. It's 100 up in the 10th over of the game for Valley Stars Ganderbal. They were invited by Designing Greens. Slow and steady wins the race. And the 2 men in the middle, they know how to scamper through for
Single and a brace. And what a grace they're carrying at the moment. The braces for another big score here. 2-404 after 9.3. Danish Muzaffar and Mujibul Haq. Even Nadeem and Latif. It's visible to the naked eye. The two men in the middle looking cool and comfortable out there. No worries at all. We've seen a couple of dots here and there, and most of the single is coming. Whenever they feel that we need a big shot, that's coming at will. And that is making things easy for this pair. They're doing very good job at the moment. They're running away. 104 after 9.5. Current rate is 10.58. That is enough to tell you guys what's going on. But that's a beauty. Shot for LBW. Umpire is unmoved. And another good over from Muntazim. He's going at 9 runs per over. His toes gone for 18 wicketless. Huge shot and is turned down by umpire. He was well down the track. Halfway stage, halfway mark. 2 for 1, a 4 time for breather in the middle. Time for drinks. We also needed a breather in the com box. Time for ad breaks coming up next. And it's 104 for 2.
Back live, 104 for 2. Thanks to our sponsors. And thank you very much, Said Shoaib. Thanks a lot. Oh, looking beautiful and so nice and awesome. Absolutely gorgeous. Back to the game 2 for 104. We are in over number 11. And this is the 11th over we are in as we watch Muntazim Bashir, 2 was none for 18. He's done with his second over and it's time for changing the bowling. Looks like Zaid Lefty is going to bowl from hospital end. On strike is going to be Mujibul Haq. And Mujib pulls it and pulls well. In the vacant space, down to the Kokana boundary for 4. Welcome to the crease after the drinks break. It's come up the bat of Mujibul Haq. And that's gone into the boundary for 408 for 2. Second spell for Zaid Lefty. On top and dispatched. The next one, no, good one. He's celebrating, trying to convince. And Zubair is unmoved, no problem there. He survives. It's a fight for the survival of the fittest in the middle, going on between VSG and Designing Dreams. Designing Dreams, Mir Bazar, near NH 44, 108 for 2. This is the 11th over we are in. Some tight overs in between. The two men in the middle, two experts when it comes to the rotation of strike, rotating and keeping that scoreboard ticking all along. This is what they need at the moment. On the other side, bowling unit need to get rid of the partnership as soon as possible, as early as possible. Danish Muzaffar as well as Mujibul Haq can change the complexion. They know how to change gears. Good looking shot. Pushing hot for the second, is back for the second. Good running. Still going fit as fiddle. Fielders need that acrobatism, but it isn't easy under scorching heat with hot and humid conditions and climate. This time drives the ball. Both looking for boundaries here. Not coming, but they're not stopping. They're going really well at the moment. This over is a boundary coming, then a single makes it 5, then a brace makes it 7, then again a single makes it 8 or 5. Now, unable to connect that, what could have been a big shot. A dot turn the over number 11. 11 gone 2 for 112. Up to being put into bat. Valley Stars, the captain said, we would love to bat first. We want to put runs on the board, and they were invited. He said, thank you very much to Didi. Nadeem Dar said, it's pretty thing to bat first. The prettier one for all of us, that we got an opportunity to set the target for other side. While chasing, teams not feeling at ease here. In Locktipora, there is nothing in the surface. As the ball isn't doing anything. But if you are to unsettle a batter, you got to variate your pace. You have to shorten the length. You got to use that back of the end slower the knuckle ball. Sometimes you can just roll fingers over the ball and use the lower trajectory. Take the pace off. Less pace. Least misery here. More pace. It's Gan and Grace for the batters. 1-1-2 for 2. Good one this time. Call is for 2 again. They're going to push hard. 1-1-3 for 2. The 12th over underway, scorching heat.
unbearable out here at Locktipora today. The hot and humid conditions and the swamp area makes it so hot and cruel at times. Is it in the gap? No, there is a man patrolling on the boundary line. Will just be one. I got Latif and Nadeem in the com box. And I request both of them be ready, as the microphone is going your way. In Expo Balls, it will be your responsibility to take us through. And it's 1-1 for 2. We are in ever number 12. Let's see. Are they going to look for a big shot here? Improvise in the air. Should be easy one. Majid Mugre completes the catch. Who isn't happy with wicketkeeper over there? You can see that he's talking with the sunlight, which was perpendicular, which was falling straight on his eyes. He said, I could have lost the sight of the ball. Wicketkeeper says, thank you very much. Don't want to go too much. Forget about that. We got the wicket breakthrough. 3 for 114, and please come in. Nadeem alongside Latif. Good moment for Designing Dreams. They are making sure that they are chipping up with wickets at regular intervals. You can see that projected score well under 200, and Designing Dreams will fancy their chances, chasing anything shorter than 190 odd. At VSG, they need somebody. Mujibul Haq, back-to-back knocks of highest quality. He is that glue who is making sure that this innings is binding together. And in walks the captain of VSG, Nadeem Da, the man who can change it from here on for VSG. If Designing Dreams pick him early, tell you what, they will do their chances the world of good. And that score of 198, which is looking scary. As far as projected score is concerned, it will absolutely come nosediving if they get him. Muntazim is the man who is going to be operating, and this time good delivery of the front foot of the mock. Nadeem Da with that single. Mujibul Haq talking about him, man of the match performance, 70 odd in the first match that he played for VSG. And after that, again, continuing in the same fashion, 25 of 19. And Muntazim Bashir, the inclusion in the playing 11 today for Designing Dreams. Round the wicket to the left, to the right-hander batter, Mujibul Haq, who is doing it in singles. Runs are coming for him. He makes sure that he anchors this game. And on the other hand, the likes of Nadeem Da, Nadeem Butt to come. They keep going the way they do usually. Manzoor Fano still in the hut. And single taken again. 2 balls, 2 singles for Nadeem Da. 117 for 3. 1 number 12 ticks by. बहुत बहुत शुक्रिया नदीम 117 3 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर पारी का मुकम्मल समाप्त हो चुका है और 8 ओवर का खेल अभी भी बाकी। मुंतजिम बशीर 3 ओवर की गेंदबाजी 23 रन और 1 विकेट अभी तक उन्होंने लिया। क्या मुंतजिम आएंगे गेंदबाजी करने के लिए या और किसी गेंदबाज को लाया जाएगा? फिलहाल अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है डिजाइनिंग ड्रीम्स के गेंदबाजों की तरफ से, क्योंकि पिच में कुछ खास बचा नहीं है गेंदबाजों के लिए, लेकिन सही दिशा और से लंबाई यहाँ पे पकड़ी है। पिच की नज़ाकत को पढ़ के गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि और अभी तक एक इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है, अभी तक 2 मुकाबले जो 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले अभी तक हुए हैं, उनमें दोनों कप्तानों ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले पंचाल
वॉरियर्स की टीम के कप्तान दानिश रफीक ने कल टॉस जीता और फिर मुझे लग रहा है बड़ी गलती उनसे हुई, फिर टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना, वो मुकाबला हार गई। और दूसरा मुकाबला जो हुआ था सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का इससे पहले, तो उसमें भी टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया कप्तान द्वारा। वो मुकाबला भी अगर हम बात करें तो अल्फला कोल्ड चीन ने हारा। ये तीसरा मुकाबला है, जाहिर लेफ्टी ने यहाँ पे टॉस जीता और टॉस जीत के पहले उनने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहली गेंद इस ओवर के इनसाइड आउट स्ट्रोक, कवर्स के ऊपर से गेंद डीप कवर क्षेत्र की ओर जा रही है, वहां से फील्डर आ रहे हैं। एक रन और जुड़ते हुए खाते में, इस एक रन के साथ 118, 3 विकेटों के नुकसान पे 12.1 ओवर की समाप्ति के बाद मुजीबुल हक 26 पे और नदीम डार टीम के कप्तान 3 गेंदों का सामना किया, 3 रन बना के खेल रहे हैं। अगली गेंद लेकर इस बार विद द स्पिन उठाने का प्रयास, काफी ऊपर हवा में गई है गेंद और गौहर मल्ला वहां पे थे, भरपूर प्रयास उन्होंने किया। अब जाके वो इशारा करते हुए कि शायद सूरज की किरणें सीधे उनके आंखों पे पड़ रही थी और उस चीज के चलते उन्हें लगा इशारा करते हुए कि गेंद मुझे नजर नहीं आई कहाँ है और कहाँ चले गई, ये आप देख सकते होंगे। फिर से मुजीबुल हक को जरूर फंसाया गया था, फंसाने का भरपूर प्रयास किया था यहाँ पे गेंदबाज ने, किस्मत ने साथ दिया। अगली गेंद लेकर इस बार बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद, टर्न और बाउंस बढ़िया, कमाल का टर्न और बाउंस यहाँ पे लेते हुए तौसीफ रमजान की गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। नदीम डार इस बार फंसे थे, भल भल बचे, किस्मत ने साथ दिया। नदीम डार का गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में, इस गेंद पर कोई रन नहीं। तौसीफ रमजान अगली गेंद लेकर इस बार उल्टा बल्ला चलाया, रिवर्स के अंदाज में गजब का शॉट बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में से गेंद धंधनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। उम्दा शॉट, पहले से तैयार थे नदीम डार, कमाल का शॉट, पहले से पिक किया गेंद को, उल्टा बल्ला चला के गेंद को निकाला रिवर्स के अंदाज में और गेंद 4 रनों के लिए सीमा पार कर गई। इम्प्रोवाइजेशन, और ऐसा करना पड़ता है जब रन आसानी के साथ नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे अतिरिक्त जोखिम भरे स्ट्रोक्स आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं। 130, 3 विकेटों के नुकसान पे। एक और बेहतरीन शॉट, चौका, 127, 3 विकेटों के नुकसान पे। नदीम डार 11 पे पहुंचे, 2 चौके बैक टू बैक इस ओवर में। तौसीफ रमजान चले, अगली गेंद लेकर इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे नदीम डार, बीट हुए कि स्वीप स्ट्रोक इस बार खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट, लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट हुए नदीम डार और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आई। ये आप देख सकते हो, पैडल स्वीप लाजवाब नदीम डार की, गेंद सीमा पार कर गई कारपेट के सारे 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट नदीम डार का, 2 बैक टू बैक चौके, उसके बाद अंतिम गेंद डॉट, ओवर की समाप्ति 127, 3 विकेटों के नुकसान पे। 13वां ओवर पारी का मुकम्मल। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई, हालांकि पिछले ओवर में 2 चौके जरूर आए, लेकिन वहां पे गेंदबाज का कोई कसूर नहीं, बल्लेबाज ने वहां पे अतिरिक्त प्रयास किया, अतिरिक्त जोखिम लिया। नदीम डार ने 2 चौके बटोरे अपने बल्ले से। मुंतजिम बशीर अपना कोटा मुकम्मल करने जा रहे, 3 ओवर की गेंदबाजी से पूर्व करी और अब दूसरे स्पेल में आएंगे अपना कोटा मुकम्मल करने के लिए मुंतजिम बशीर। 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं। पहली गेंद लेकर अच्छी गेंद इस बार फ्रंट फुट पे आए, मुजीबुल हक सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, हालांकि ठीक ठाक ढंग से खेल नहीं पाए। इस गेंद पर कोई रन नहीं, 127, 3 विकेटों के नुकसान पे। 9.6 की औसत से रन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन चतुराई भरी गेंद, शरीर पे गेंद जानबूझ के डाली, मुंतजिम ने चकमा दिया मुजीबुल हक को, गेंद थाई से टकराने के बाद वही पास में लुढ़क गई। इस गेंद पर कोई रन नहीं। कुछ अलग सोच विचार के साथ, कुछ अलग रणनीति के साथ, कुछ अलग तरीके से गेंदबाजी करने के इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को ऑन साइड में मोड़ा। 1 रन जरूर मिलेगा, एक ही रन से वहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा। 127 या 2 रन इस गेंद पर मिले, 2 रन इस गेंद पर मुजीबुल हक सामने। इन 2 रनों के साथ 129 टीम के रन से, अच्छा स्ट्रोक इस बार लिया था, जानबूझ के गेंद के आने का इंतजार किया
ऑन साइड में गेंद को मोड़ा 2 रनों के लिए। वैली स्टार्स का गैंदरबल 129 अगले गेंद लेकर फिर से अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, उम्दा गेंदबाजी मुंतजिम बशीर यहां पे करते हुए। किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जा रहा है मुजीबुल हक को कि वो बड़े शॉट के लिए जाए। बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को सीधे बल्ले से निकालना चाहते थे, गेंद थाई से टकराने के बाद वही पास में लुढ़क गई। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन आने चाहिए वैली स्टार्स गांदरबल की टीम के लिए। रन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। 13.3 के बाद 130, 3 विकेटों के नुकसान पे। अगली गेंद लेकर अब स्टंप पर आती हुई गेंद पीछे हटे, गेंद को निकाला वाइड स्लॉन्ग क्षेत्र में। बेहतरीन फील्डिंग उस और फील्डर द्वारा 1 रन और जोड़ते हुए खाते में। 1 रन के साथ 131। पहली माजिद मागरे वाइड स्लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर, उन्होंने गेंद को फील्ड तो किया, हालांकि गेंद उनके हाथों से जरूर छटक गई, लेकिन दूसरा रन बनाने की संभावना ही नहीं थी वहां पे, और ना ही दोनों बल्लेबाजों ने प्रयास किया रन बनाने का। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। 131, 3 विकेटों के नुकसान पे। चौथा पर पारी का फिलहाल चलता हुआ बॉटम हेड का इस बार बढ़िया उपयोग करते हुए गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ फिर से माजिद मागरे की ओर। काफी लंबा सफर उन्हें तय करना पड़ा वाइड लॉन्ग ऑन से, तकरीबन डीप का कॉर्नर क्षेत्र तक भाग के जाना पड़ा। इस गेंद पर 1 रन, इस 1 रन के साथ 132, 3 विकेटों के नुकसान पे। बेहतरीन स्पेल, कमाल की गेंदबाजी इस पिच पे जहां पे आपके लिए कुछ खास मदद है नहीं, बल्लेबाजों के लिए ये पिच जो है अनुकूल है और बल्लेबाजी यहां पे करना बिल्कुल आसान है। उस पिच पे आप जिस इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं तो इस बात का बिल्कुल ये परिचय है कि आपके पास कितना बेहतरीन अच्छा खासा अनुभव आपके पास है। अगली गेंद फिर से अंदर की ओर आती हुई, शरीर पे आती हुई गेंद का मोड़ा ऑन साइड में डीप मिड विकेट क्षेत्र में, सिंगल से ये ओवर समाप्त। 133, 3 विकेटों के नुकसान पे 14वां ओवर पारी का मुकम्मल समाप्त हुआ है। 6 ओवरों का खेल भी बचा है पहली पारी में वैली स्टार्स गांदरबल के टीम के लिए। मुजीबुल हक 25 गेंदें फेस की और 30 रन बनाए, और वहीं पे नदीम डार 9 गेंदों का सामना किया और 13 रन बना के वो भी खेल रहे हैं। शायद वहां पे ग्लव्स मांग रहे हैं मुंतजिम मुजीबुल हक, और नदीम डार अच्छी खासी धूप खिली हुई लक्टीपोरा के मैदान पे। तकरीबन मुनव्वर साहब तकरीबन 35 या 37 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पे होगा। बिल्कुल तकरीबन 40 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पे है, मुश्किल। और जहाँ बिल्कुल 40 डिग्री के आसपास आप में तापमान है, 40 डिग्री के आसपास तापमान लक्टीपोरा के मैदान पे चलता हुआ बेहतरीन दृश्य, और काफी खूबसूरत मैदान है ये। अगर हम बात करें फिलहाल सब्ज घास की चादर ऐसे मानो कि ओढ़ी गई है इस मैदान पे, बेहतरीन मैदान। और जान साहब भी वहां पे फिलहाल बातचीत करते हुए बशीर साहब के साथ अंदर। बेस्ट एंटरटेनर ऑफ और वैली, अगर हम बात करें जान साहब की, पुलवामा से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन इंसान और खुद भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी खूबी, इसीलिए गांदरबल के लोग, खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोग इसे पसंद करते हैं जान साहब को। 133, 3 विकेटों के नुकसान पे। नदीम डार 13 पे, मुजीबुल हक 30 पे। 25 गेंदों का सामना करने के बाद तौसीफ रमजान आएंगे फिर से एक ओवर डालने के लिए। पहले ओवर में 10 रन दिए, किस्मत वाले 2 चौके वहां पे बटोरे थे नदीम डार ने, हालांकि उसमें गेंदबाज का कोई कसूर नहीं है। बल्लेबाजी जब उस प्रकार की हो, जब हाई स्टैंडर्ड का बल्लेबाज आपके सामने हो, एक अनुभवी बल्लेबाज, अद्भुत बल्लेबाज जब आपके सामने हो, तो फिर मुश्किल होता है उसके अगेंस्ट गेंदबाजी करना। फिलहाल इस ओवर में क्या करेंगे नदीम डार, पहले से उल्टा बल्ला चलाया, रिवर्स स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाला और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस बार आता हुआ रिवर्स स्वीप के अंदाज में, शॉट गली के ऊपर से इस बार गेंद को लिया और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बड़ा बेहतरीन शॉट, इससे पहले भी इसी के ओवर में एक अच्छा शॉट आया था रिवर्स के अंदाज में, इस बार भी पहली गेंद पर चौका बटोरा। अगली गेंद को ऑन साइड में निकाला खूबसूरती के साथ, 2 फील्डर्स के बीच में से धंधर आती हुई डीप का कॉर्नर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। नदीम डार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 बैक टू बैक चौके, कमाल के, पहला रिवर्स स्वीप के अंदाज में और दूसरा ऑन साइड में तकरीबन 16 के अंदाज में लिया गेंद को 4 रनों के लिए। बेहतरीन 2 चौके, उम्दा बल्लेबाजी नदीम डार द्वारा।
क्योंकि उन्हें पता है यहां से अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 250 230 तक पहुंचना जरूरी है वैली स्टार्स गांदरबल की टीम को। और क्योंकि डू और डाई का मुकाबला है, ऐसे दोनों टीमें दो दो हाथ करेगी इस मुकाबले को जीता जाए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए। फिलहाल कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले को? अगले गेंद बैकफुट पे जाके खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया कि डीप पॉइंट पे फील्डर तैनात बिल्कुल क्रीज के सीध में, गेंद सीधे उनके पास चली गई। नदीम डार 2 चौके 1 सिंगल, सेंसेबल क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट, उम्दा क्रिकेट, शानदार क्रिकेट नदीम डार यहां पे खेलते हुए 2 चौके लगाने के बाद अब जाके अपने जोड़ीदार को फिलहाल सामने लाया है। स्ट्राइक उनके पास है अब मुजीबुल हक के पास, 1 सिंगल बटोर के स्ट्राइक पे लाया मुजीबुल हक को नदीम ने 142 3 विकेटों के नुकसान पे। अगले के लेकर इस बार गेंद के आने की प्रतीक्षा जरूर की, अंतिम शुरू में लीड कट करने जरूर गए, सीधे फील्डर के हाथों में खेला। 143 1 रन इस गेंद पर, अच्छी बल्लेबाजी मुजीबुल हक द्वारा। एक मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी है ये और इनके पास रिस्ट पावर लाजवाब रहता है, कमाल के खिलाड़ी। एक कैच उनका ड्रॉप हुआ है, जीवनदान उनको शुरुआत में मिला, फिलहाल उस जीवनदान का वो लाभ लेते हुए बार अच्छी गेंद अंदर की ओर आई, बैकफुट पे जाके खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला और क्या गेंद सीमा पार करेगी? जी हाँ, फिसल गए वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर, बेहतरीन शॉट बैकफुट पे जाके सीधे बल्ले से गेंद को निकाला। कमाल का शॉट नदीम डार का, बेहतरीन शॉट, अपने दाएं पैर पे वहां पे वजन लेके सीधे बल्ले से गेंद को निकाला था। बढ़िया शानदार फील्डिंग, लेकिन एन मौके पे गेंद हाथ में नहीं आई। गेंद सीमा पार कर गई 4 रनों के लिए। फिर से उल्टा बल्ला चलाया, लाजवाब, उम्दा गजब का स्ट्रोक नदीम डार के बल्ले से, डी बैकवर्ड पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 153 150 का आंकड़ा छू लिया वैली स्टार्स गांदरबल की टीम ने, उम्दा गजब का। और ये स्ट्रोक नदीम डार से बेहतर कौन से बल्लेबाज खेल सकते? कमाल का शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, थलका सा आगे गेंद को टिप्पा खिलाया, पहले से तैयार थे स्ट्रोक के लिए नदीम डार। बल्लेबाज के बल्ले बल्ले और गेंदबाज के थल्ले थल्ले यहां पे होते हुए, कमाल का स्ट्रोक है ये। It is not that Tausif Ramzan has bowled that badly. The scorecard suggests none for 30 in his 2 overs. And tell you what, the class of a man, Nadeem Dar, makes that look like an ordinary bowling spell. That's what big players do. They take the game away from you. They get a sniff and they absolutely pounce on it. That is exactly what he is doing, Nadeem Dar, pouncing on everything that is on offer. 10.20 the current run rate. It is not still out of hands for Designing Dreams. They got to take Nadeem Dar's wicket. It is going to be a huge moment, and if they pick him, still early days, they could be chasing under 200. But the question is, who is going to take his wicket? Osnan maybe, none for 21 from his 2 overs so far that he has bowled. Harry comes again for the 3rd over, starting the proceedings this afternoon. Remember, Designing Dreams winning the toss, and all the 3 quarterfinals so far that have been played, the captains deciding to chase first. But the irony is that the 2 previous captains lost while chasing, and what is going to happen in this chase? Looks like VIG are absolutely firm favourites on the driver's seat. But you never know. In a game of cricket, there is so much to offer. Surprises and hot breaks. We have seen that in this tournament. Can we see it today for Designing Dreams? Azlan on the top of his bowling mark. They are shuffling the fielders a bit. Absolute scorching hot in the middle, and not easy for the fielding side. Can they pick up Nadeem Dar? Mujibul Haq is on strike. First ball of the 16th over. This pace has to go Designing Dreams' way to be in this game. Can they produce 5 magical overs? And Nadeem Dar, the aggressor of the 2, is back on strike. 20
Beg your pardon, 32 of just 14 deliveries he has faced so far. And he has looked a class apart. As I said, right from the ball one, he has gone for that attacking mode, bringing his A game to the fore. Hasnan, look at that, absolutely unconventional yet again. And waiting for the umpire signal, looks like it bounced before that, hitting that advertising holdings. Yes, there comes the signal. 4 runs for Nadeem Dar. How many times we have seen that shot today? First again is the Superdose, and now pace bowler coming and going for runs straight away. Thank you very much, Believer. Athletics are gonna sponsor bets for top performers in the tournament from here on. In the knockout stage, we're gonna see this, and there is something special. His name is Mara Saab, is the owner of this brand, and he's gonna give away these bets. Thank you to Mohsin Saab, the owner, the CEO of MA Interior and the Exterior. This is a special one, and he's announced it's a block of bets to go away for the top performers in the knockout stage. And this is a good move. Believer Athletics will be part of this wonderful tournament, and it will be playing its part in the coming days. Thank you, Mohsin Saab, for this wonderful message. And players, keep performing. You have something special to take away. Now, Believer Athletics is going to be part of our team, and it's going to team up with us. And those who will hit the board of MA Interior and the Exterior, they're going to take away 1K cash award. Oh, come on, batters. What are you waiting for? Come on, hit the ball and hit that board. That's important. Even in the presentation, I will mention it now. You have to hit that board of MA Interior and the Exterior. You're gonna take away. It should be a 6. And it doesn't matter, 4 or a 6. But that's going to be a special one. But you mean it should be direct hitting the board, not on the bounce? What are you talking about? It's typical one. Yeah, I have to talk with Mohsin Saab, the owner. And thanks to the Mera Saab, the BA, Believer Athletics BA. He's having this brand and has announced that some of the bats are going to go away for the top performers from today onwards. It is the third quarterfinal and the second one for today, the last game for today, and tomorrow we have the last quarterfinal coming up, Nadeem Uzama. And Nadeem, we were talking about that. I'm going to throw out few comments for BA coming over this, such an initiative that the bats are going away for the top performers in the coming days, starting from today. Thank you, Nadeem. And he's in deep love with A-Star, and we are all in deep love with all the brands here in South Kashmir, because we want to see Kashmir promoting itself and reaching the new heights. Even KISS has done wonders. And you know that one of the under-19 lad from Sri Lankan cricketer scored today block of runs using the KISS bat, that too against the Indian side. That is an achievement. That because I'm the part and parcel of KISS nowadays. You have to take it and you have to digest it. You won't digest it, but that's the beauty. And that's the bitter reality. 164 for 3. But Murtaza, thank you very much for coming up that stat. Even I know that. I saw the post. One of the Sri Lankan cricketers, the international under-19 star, has scored that brilliant knock against the Indian under-9. You know that scoring runs against India is an achievement. Because bleed blues, or the men in blue, are hard to beat. It isn't easy. Country is lifting title after title. We are block of trophies in the cabinet. Maybe one more coming up. Gavarmala comes into the attack and straight away runs flowing thick and fast. Mujibul Haq joins the party, takes a leap out Nadeem Dar's book and dispatches it for a 6. This is some start for Mujibul Haq in this one. Remember, last 4 overs coming up, and they are chasing leather, designing rims. Look at that, absolutely in the slot. And a batsman of his stature, Mujibul Haq, he doesn't miss out. And we were talking about
Believer Athletics, Mr. Mehra Saab, the owner of BA Premium Willow Bats. And every man of the match is going to get a willow from him. We hope that he brings one for the commentary team as well. We are fingers crossed and waiting for the one. Latif Saab is smiling. Inshallah, he will soon bring one. And coming back to the game. Coming back to the game, that projected score is looking absolutely scary now. Beyond 200, and shots like this is going to take them beyond 200. Look at that from Mujibul Haq. No six for him at this point of time, but he hits back-to-back sixes. Start of that 17th over. Look at that pickup shot from Mujibul Haq, and it goes all the way for six. Gawhar Malla, not an ideal start for the 17th over. Two full deliveries, 2 sixes for Mujibul Haq. Third time in this over. Gawhar Malla is feeling the heat. Again, pitch it up. Oh, he has to feel lucky to get away from that one. And Gawhar Malla, the fifer in the last game, on the back of that performance. They are playing this quarter-final game, but today it has not been his day. 9 balls so far bowled, 29 runs from his spell. He goes again, and another one. Yes, out of the ground it goes. Mujibul Haq brings his half century of his 32 deliveries. That is the class of the man. He was batting just run a ball, and now look at that strike rate. It has absolutely skyrocketed to 150 odd now. And those 3 sixes mean that this is going to be a big over. Pitches it up again. He goes again, and result is the same. Make it 4 in the over. He is going berserk in the middle, is Mujibul Haq. And Gawhar Malla is not learning the lessons. All the 4 balls were full, and he takes toll of those. Hits it for a maximum. We are lost for the balls, and designing dreams. Their dreams are shattering in the middle. "24 from the first 5 deliveries so far. Gawhar Malla, all the 4 balls were full. No change in pace there, and narrow escape there for the core that is going on the road there. 188. Would you believe that? How fast a T20 game can change. We were talking about chasing 200, under 200, and now suddenly they are looking for 250 from here on now. 24 from this was so far. Mujibul Haq pitches it up again, goes again, chance. Has it been taken? No, Zahid Lapti misses that opportunity, and only a single to finish that one. 25 from the 17th, 188 for 5. Latif. बहुत बहुत शुक्रिया। और आसान सा कैच जाहिर लेफ्टी से यहाँ पे ड्रॉप हुआ। आसान सा कैच बिल्कुल हाथों में आ रहा था, लेकिन मौके पे गेंद हाथों से छटक गई। संतुलन बिगड़ा और जीवनदान दूसरा मिला मुजीबुल हक को। आसान सा कैच बिल्कुल हाथों में आ रहा था, लेकिन एंड मौके पे कैच वहां पे गेंद हाथों से फिसल गई। एक बेहतरीन जीवनदान, दूसरा जीवनदान यहाँ पे मिलता हुआ मुजीबुल हक को। दोबारा आप देख सकते होंगे किस प्रकार की बड़ी गलती जाहिर लेफ्टी से हुई। टीम के कप्तान द्वारा ये कैच ड्रॉप किया गया। 17 के बाद 189, 3 विकेटों के नुकसान पे 3 ओवरों का खेल बाकी। गौहर मल्ला का ओवर मुकम्मल हो चुका है। 2 ओवर में गौहर मल्ला ने 42 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने निकाला। काफी खर्चीली गेंदबाजी। गुलडान का विकेट उन्हें मिला था शुरुआत में पहले ओवर में, उसके बाद उनको हटाया गया था। दूसरे स्पेल में फिर से जाहिर लेफ्टी ने लाया, लेकिन इस ओवर में भी काफी खर्चीले साबित हुए। तौसीफ रमजान आएंगे। पहले गेंद, कदमों का इस्तेमाल, सीधे फ्लैट छक्का वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गजब का शॉट मुजीबुल हक के
बल्ले से यहाँ पे आया और छक्के के साथ मुजीबुल हक पहुंचे 64 पे। कदमों का इस्तेमाल, गेंद के पिच तक आए, फ्लाइट दी, फ्लाइट को स्वीकार किया और गेंद को पहुंचा दिया बिल्कुल हमारे कॉम्बॉक्स के बाई ओर। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। इस छक्के के साथ 195, 3 विकेटों के नुकसान पे। सब बिल्कुल निश्चित है कि यहां से काफी रन बन पाएंगे अगर मुजीबुल हक वहां पे रहे, क्योंकि उनका कैच ड्रॉप करना तो सब मुश्किल हो सकता है यहाँ पे डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम के लिए, कि यहां से जितने भी आप वो रन्स बनाएंगे उतने ही रन्स चुभेंगे डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को, क्योंकि कैच आपने ड्रॉप किया। एक और गेंद डालने के लिए तैयार, हालांकि ये आप पिछला स्ट्रोक देख सकते हैं। कमाल का शॉट, कदमों का इस्तेमाल, फ्लैट छक्का और इस छक्के के साथ 195, 3 विकेटों के नुकसान पे। एक और गेंद देकर हमारे कॉम्बॉक्स एंड से चले। तौसीफ रमजान 36 रन अभी तक दे चुके हैं, मात्र तीसरा पर अपने कोटे का वेट डाल रहे हैं। नदीम डाल रहे हैं उनके विरुद्ध अच्छे बल्लेबाज, अच्छे स्ट्रोक्स खेले और ऑफ स्टंप से बाहर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने बाकी, जब तक शॉर्ट कवर से गेंद को फील्ड किया जाता। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 1 रन के साथ 196, 3 विकेटों के नुकसान पे। 17.2 ओवर की समाप्ति के बाद नदीम डार 41 पे, मुजीबुल हक 65 पे। 36 गेंदों का सामना करने के बाद तौसीफ रमजान 2.2, 37 रन और तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए शॉट बैकवर्ड पॉइंट पे जो फील्डर उसको स्लिप कॉर्नर में वहां पे बुलाया गया है। अगली गेंद लेकर नदीम डार के लिए आप स्टंप से बाहर, सीधे गेंद 6 रनों के लिए। कवर इसके ऊपर से रूम मिला और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से, वो भी नदीम डार के लिए। वो ताड़ में रहते, गलत गेंद उन्हें कब मिलेगी और उसका इंतजार वो करते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद जरूर निकली और खूबसूरती के साथ गेंद को कवर्स के ऊपर से पहुंचा दिया फ्लैट छक्के के लिए सीमा रेखा से बाहर। बेहतरीन छक्का, 200 पार। वैली स्टार्स गंदरबल के रन से किया 200 तो 3 विकेटों के नुकसान पे। 17.3 के बाद कुल मिलाकर अभी भी 15 गेंदों का खेल बाकी। कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग वहां पे। 1 रन और जुड़ते हुए 2 रन इस गेंद पर जुड़े। नदीम डार ने यहाँ पे 2 रन जोड़े। बटोरे सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से गेंद को खेला था। 2 रनों के साथ टीम के रन से किया 204, 3 विकेटों के नुकसान पे। नदीम डार अगली गेंद लेकर और यहाँ पे कैप्टन बोल्ड का अवसर बना था, कैच को लपकना चाहिए था, लपक नहीं पाए। 1 रन और जोड़ते हुए खाते में। इस 1 रन के साथ 205 रन आसानी के साथ अब आ रहे वैली स्टार्स गंदरबल की टीम के लिए। कप्तान अभी भी बने हुए क्रीज पे नदीम डार। 17.5 के बाद 205, 3 विकेटों के नुकसान पे। कुल मिलाकर ये 18वां ओवर चलता हुआ पहली पारी का टॉस हार के मदो किया गया वैली स्टार्स गंदरबल की टीम को कि वो बल्लेबाजी करे। फिलहाल उनके हित में निर्णय बेहतरीन साबित होता हुआ स्लो के अंदाज में खूबसूरती के साथ वाइड कॉर्नर, सीमा रेखा से बाहर गेंद अंदर आती हुई एक और चौका मुजीबुल हक के बल्ले से। 69 पे वो पहुंचे 37 गेंदों का सामना करने के बाद। शुरुआत में जरूर उनके स्ट्राइक रेट काफी नीचे चल रही थी, तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जाके उनकी स्ट्राइक रेट में सुधार नजर आता हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, अब स्ट्राइक रेट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते कमाल का शॉट, ऑफ स्टंप से बाहर स्लॉट में गेंद कर दी खूबसूरती के साथ। गेंद को वाइड कॉर्नर, सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, उम्दा शॉट, एक पैर बाहर निकाला, गेंद के पिच तक आए और विद स्पिन इस बार गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। तौसीफ रमजान 3 ओवर की गेंदबाजी काफी खर्चीले साबित हुए। 50 रन अपने 3 ओवर्स में दिए तौसीफ रमजान ने। 209, 3 विकेटों के नुकसान पे। नदीम डार का अर्धशतक मुकम्मल। 21 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रन उन्होंने मुकम्मल किए। कमाल की पारी, अंत में आए बेहतरीन फिनिशर है और कमाल के कप्तान है ये नदीम डार की, जहां तक हम बात करें। और बेहतरीन स्ट्रोक्स, इंप्रोवाइजेशन बढ़िया और रिवर्स स्वीप लाजवाब खेले उन्होंने आज इस मुकाबले में। और इस बार ऑल साइड में गेंद को उठा दिया, गेंद काफी ऊपर, सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए डीप कॉर्नर के ऊपर से इस बार नदीम डार
के बल्ले से ये छक्का 56 पे पहुंचे। शॉट गेंद, हालांकि शरीर पे गेंद आ रही थी लेकिन तुरंत इस गेंद को परखा मापा नदीम डार ने। ऊंचा लेफ्ट स्ट्रोक खेला और गेंद 6 रनों के लिए सीमा पार। बेहतरीन छक्का, नजाकत भरा स्ट्रोक नदीम डार का। और ये स्ट्रोक आसान नहीं रहता है खेलना, शरीर पे आ रही थी गेंद, हालांकि पहले से तैयार थे वहां पे नदीम डार। कमाल का छक्का, एक पैर बिल्कुल ऑन साइड को मोड़ा हुआ नदीम डार का। अगली गेंद को खेला है वाइड स्लॉन्ग और क्षेत्र में। 1 रन और जुड़ते हुए खाते में 216, 3 विकेटों के नुकसान पे। तकरीबन 230 या 240 तक जरूर पहुंचना चाहेगी पहली पारी में। और मुश्किल वहां पे मुझे लग रहा है टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेना जाहिद डार का, जो इस वक्त गेंदबाजी करे, मुझे लग रहा है ये निर्णय उनके हित में दुरुस्त साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर दूसरी पारी में 200 से अधिक रन बनाना मुश्किल। ब्लॉक होल में गेंद, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को नकारा गया। इस गेंद पर 1 रन जरूर मिलेगी लगभग की सूरत में। शायद बल्ले से गेंद लगी, 1 रन और जुड़ती हुई। जोरदार अपील जरूर की थी लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, समत विश्वास कम। 1 रन और जोड़ते हुए 217, 3 विकेटों के नुकसान पे 18.3 के बाद। अगली गेंद 217, टीम के रन से किया। अगली गेंद बिल्कुल यॉक कराने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर डीप हो रही थी और बल्ले की जड़ से गेंद टकराई। बेस्ट एंटरटेनर ऑफ और वैली जॉन साहब यहाँ पे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जॉन साहब यहाँ पे आने के लिए। 217, 3 विकेटों के नुकसान पे 3 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद लेकर इस बार फिर से यॉक कराने का प्रयास, फुल टॉस बना के गेंद को निकाला। गेंद काफी फाइन जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। डीप स्क्वायर लेग से जब तक फील्डर भाग के आते, दूसरा रन पे मुकम्मल आसानी के साथ नदीम डार ने किया। इन 2 रनों के साथ 219 पे टीम के रन संख्या पहुंची, 3 विकेटों के नुकसान पे। 6, 7, 8, 9, 10 रन अभी तक 4 गेंदों से आए हैं। कमाल की पारी नदीम डार यहाँ पे खेलते हुए अपने टीम के लिए। 59 रन बनाए 24 गेंदों का मात्र सामना करने के बाद। अगली गेंद लेकर आप स्टंप से बाहर, शरीर से दूर जानबूझ के गेंद रखी, फुल टॉस बना के गेंद को निकाला डीप पॉइंट क्षेत्र में। कारपेट के सारे गेंद चले गई उस और फील्डर के पास, जब तक वे गेंद को फील्ड करते। अंतिम गेंद पर शायद 1 रन, 220, 3 विकेटों के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंदें अभी बाकी है मुनव्वर, और कितने रन बन पाएंगे इन अंतिम 6 गेंदों में? Don't know. 220 for 3. Let's see. Together we shall find out. So let's find it out where they're going to finish it up. Lal Saab is there. Lal Mohammad Ganai, cricket analyst from South Kashmir. He's here, an experienced lad. Former banker, now a cricket enthusiast. He's always around the ground. Wherever there is cricket going on, he's there. Independent cricket analyst or the freelancer. 2-1 for 3, and the cameraman is focusing on Lal Saab. And after 19, they are 3 down, 221. Nadeem Dar is batting on 60 and his partner 71 of 39. Nadeem Dar 60 of 25. Time for advertisement. Slipped. Shuffle across. Works it away nicely. Nadeem Dar on strike now, handing strike to Mujibul Haq, who's batting on 70 of 39 balls. You're watching KIS, and moreover, it's coming your way on State Sports Live. This is the 3rd quarter final underway here at the Centre. Thanks to the likes of Mujib and Nadeem. The way they attack it. The bowlers in the middle overs. Oh, look at that one. That's travelling it. That's gone. And it's gone for a 6, 219 for 3. No. Scorer is trying to rectify it. We were having some issues with the scorecard here. Take a look again. Nice pickup. It was in the slot, but look at the man, the power he possesses. The shot selection is really nice. And he just cleared the man at long on with ease. Oh, wonderful pickup. Great shot off the bat of Mujibul Haq.
He's of tall stature when it comes to the stroke play and the experience he carry. Is he going to carry the bat till the very last ball here in this over? 2-7 for 3. They started slowly in the middle overs thanks to the likes of Danish Muzaffar. And he batted alongside Mujibul Haq, stitching that stand and sharing the partnership. Sharing is simply caring. The way they cared for the innings. The way manipulated in the middle overs. That was so nice. There was elegance for excellence. And we have seen that beautiful display of character in the middle overs. Giving Nadeem Dar that space, that time to come in and enjoy. Three down, 2-7. We are in over number 3 down, 227 on the board. Mujib has got 4 balls left in this over. Is he going to go after? Will he allow captain to come in and just enjoy the batsmanship? Will he take the responsibility? Only the time will tell us. Arif Chotu says it's okay. Well, thank you, Nadeem Uzama, for this love. This is the final over we are in as we watch once again. Side lefty. Oh, that one flies again. Where is this one going? And that's done the distance again. Looks like we'll have to wait and watch. Yes, it has gone all the way. It carried. And it's beyond the boundary cushion. 6 number 2. Timber Bavuma Valley is going really nice here. Is playing some cracking shots. And look at that one. That's pulled away. And he bangs him away for a maximum. Down ball there. He's an expert. Cooler down his shoulders. And the next one is knocked him over. He has his man in revenge. But too late. He's gone on 82-41. 233 for 4. And it's Mujib who walks back and look at the pat on the bat from his partner. His captain telling him you have done really well. Just gone through and there was little deviation and indacker, kind of an indacker. Jag back into the right hander. You miss Sahid. Top of leg goes flying. Hitting the top of stumps. And sending him on his way back to pavilion. Side lefty strikes. And Mujib has done the job for his team. Scored 80 plus. 82 isn't bad. Is an achievement as a batter in a T20 game with lesser number of balls. Having said that, when you have a 200 strike rate in a shorter format, that's balle balle. That is an excellent display. Yeah, you know, bowlers sometimes they won't be happy with all this, but we have seen that carnage. We have seen that distant and downtown game going on and nothing going bowlers' way. They were on the receiving end, suppressed and on the recessive portion, and they received a lot of treatment today. And the way they were treated, they want to forget today's afternoon. But it's going to give them sleepless nights, couple of tough days to forget today's treatment. And that's why we use a word in Hindi that's called a thalle thalle. Goes for it, and 4 more. Mujibul Haq 26-31 from 26 to begin with, and after that next 15 he scores 51. Goes to show the class of the man, how well he shifted gears, and in that lone over from Gawad took him to the cleaners. 25 from that over, and the momentum completely shifted afterwards, and Valley Stars Ganderbal are favourites to win this match, and this is the thumping below.
Has that been taken? No, it has gone all the way for 6. What a way to finish that innings. VLG finish at 243. And Junaid Bashir just thumping the authority on that scoreline. 243 is what they finish at, thanks to some absolute magnificent innings by the likes of Mujibul Haq, Nadeem Dar, Danish Muzaffar, and now this finish from that man. We will be coming back with a chase of 244. In fact, it was Nadeem Butt who hit those sixes, not Junaid. We will be coming back. Till then, take care. अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लेटेस्ट फैशन और प्रीमियम क्वालिटी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो जरूर आइए 93 आउटफिट्स में। यावर भाई की शॉप पर मिलते हैं स्टाइलिश शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कार्गो पैंट्स, ट्राउजर्स, जैकेट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स और हर तरह के फैशनेबल आउटफिट्स। सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ ट्रेंडी शूज और कंफर्टेबल स्लीपर्स का भी जबरदस्त कलेक्शन अवेलेबल है। टॉप ब्रांड्स, बेहतरीन क्वालिटी और बजट फ्रेंडली प्राइसेस के साथ हर एज के लिए परफेक्ट चॉइस। तो देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए 93 आउटफिट्स, मेन मार्केट संगम, सुमो स्टैंड के पास। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लेटेस्ट फैशन और प्रीमियम क्वालिटी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो जरूर आइए 93 आउटफिट्स में। यावर भाई की शॉप पर मिलते हैं स्टाइलिश शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कार्गो पैंट्स, ट्राउजर्स, जैकेट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स और हर तरह के फैशनेबल आउटफिट्स। सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ ट्रेंडी शूज और कंफर्टेबल स्लीपर्स का भी जबरदस्त कलेक्शन अवेलेबल है। टॉप ब्रांड्स, बेहतरीन क्वालिटी और बजट फ्रेंडली प्राइसेस के साथ हर एज के लिए परफेक्ट चॉइस। At A Star, we build bats for champions, crafted to deliver.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब मलिक, विजन कश्मीर। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब मलिक, विजन कश्मीर। आप लोगों का प्यार
Assalamu alaikum, good afternoon and welcome to the run chase. It is going to be a 244 mammoth for Didi to chase this afternoon, and it's going to continue till late afternoon, and it will end around that early evening here at the center of Locktipora. Here we are, the two openers in the middle, Arhan and his good side lefty. I hope that Arhan will be sponsored in coming days, as I praise his talent over the past couple of days. And there is going to be another big message coming from MA Interiors and Exteriors Designing Beach Bihara that he will be sponsored today. That's a great news from Mohsin Saab. Thank you very much, Mohsin Saab, for this huge announcement that he will be sponsored today. Arhan, he deserved that sponsorship. And even Kiss is also going to support him from his side. And he deserved that praise. Even I saw that instinct when I was doing commentary and he was batting. It was flawless, and it was something special. Bowlers were absolutely clueless. They were having no answer to this lad, the way he batted on the day. And it's the second outing for this lad. Is he going to do something special with the bat? He has to be at his very own best today to make a mark with the bat. They are chasing a mammoth. It's a mountain to climb. Tough ask, daunting task. 1 for none. Zaid lefty and Arhan. This is the pair they're going to go with. And they're going with, and look at that shot. That is a classy flick shot, flicked away. Lefty is not going to waste his time in the middle. He's not going to waste his energy. He just energized that one, clipped away nicely in front of Scare on the on, and he's going to get 4 for that. It's the first boundary of the run chase here at the center. Thanks to the Believer Athletics for his support, and he has announced some of the quality bats to go away for the top performers in today's quarterfinal, in tomorrow's quarterfinal, in the semifinals coming up, and the final. Oh, look at that one. That is majestic from Zaid lefty. Open at the bat face. So nice, and elegance is there. Crisply done. Zaid lefty, you beauty man. Sahil Khan, he has to settle down a bit here. But look at that shot again. That is, oh, classy. Zaid lefty. This is the young generation we should be proud of. Believe me, these are going to be the future hands, and our future is in safe hands, inshallah, when it comes to the cricket. Zaid left-hand Arhan like batters. That's what we need. This class. And works it away nicely. Scare on the on. There is a man patrolling on the boundary line, Junaid Bashir. His proper name is Asif Saeed. It's 10 for none after 4 balls in the very first. So they're into the double pick. And here we are. In the very first over, we have the chief organizer, Amir Ganai here. Equally supported by Said Shoaib Ataullah. Ramiz is another one. Then talking of the sponsors of the tournament, I start with Panchal Group. Panch ka Panch right behind this tournament. Then talking of MA Interior Exterior Designing Beach Bihara. The Spice Bay and KIS Unstoppable comes down the track. Arhan trying to show some intent here. But I think it was Zaid lefty who comes down the track, trying to carry on and continue with the same pace. No, it was Arhan. I think Zaid scampered through earlier on. And that single will take it to 11. Zaid back on to strike to face the last one from Sahil Khan, who's gone for 10. And an extra run coming. Now it's cool here at the center. Now we can feel that sigh of relief. Early morning and afternoon, it wasn't easy to be here. That's in the air and in the gap. Will this beat the man? It does. That's 4. 15 to end the over number 1. A good start. A rollicking start. 15 with applause, chasing 244. Are we in for a great game of cricket? Let's see. Is it gonna go down to the wire? It will be early to say, but crowd want that nail-biter of a contest. Cliffhanger here at the center. I got Latif and Nadeem. We start with Latif here because Nadeem is a little busy at the moment. He is an AI expert also. 15 टीम के रोज सके बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर की समाप्ति के बाद अरहान 1 पे और जाहिद लेफ्टी अभी तक 13 रन बना चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते हैं और पावर प्ले में देखना होगा कितने रन बनाने में कामयाब होगी डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम, डीडी की टीम। और निश्चित तौर पे पावर प्ले में तकरीबन 70 से लेकर 80 का आंकड़ा जरूर छूना चाहेगी यहाँ से डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम अगर इस
मुकाबले को उन्हें जीतना है, लेकिन जाहिर लेफ्टी की यहाँ पे विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। यदि वो क्रीज पे डटे रहेंगे, आशंकाएं उम्मीदें कायम रहेगी इस मुकाबले में डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम की। 15 बगैर किसी नुकसान के लक्ष्य 245 का इस मुकाबले को जीतने के लिए मिला है डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। नदीम बट गेंदबाजी का जिम्मा दूर वाले छोर से अपने पास रखेंगे और उनके सामने स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं अरहान लेफ्टी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले की टॉप पे गेंद जाके टकराई, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, खुद वहां पे फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 15 टीम के रन से किया। Sorry, correction comes in. There is it was an announcement from Mohsin Saab. It doesn't mean that we said that he's being sponsored. We were talking about he should be sponsored. And Katru Prospera, thank you very much for your love, buddy. अगले गेंद को खूब Well, talking about the Katru Prospera, they have announced that we're going to sponsor him. And Mohsin Saab is talking about that. I will be paying him for each and every game from my pocket, from my own pocket. That's another great news, I think. It's a good message coming in. But Arhan Bashir deserved that. And thank you, Katru Prospera. And there is no need to worry at all. I think, Latif, people coming in, they just feel that somebody has been snatched away from us. We were just talking about it. These were my words when I was talking about this lad, that he deserved that platform. And thanks to the Katru Prospera, they came forward. Heads up to them. But that doesn't mean we are taking away something. We want to see you guys coming in and support them, because this is our future generation. We have lost one. The second one is on verge to the drug menace in the valley. 1.4 million people are indulging in drug menace. So we can't offer the third one. And this one, it will be the end of our generation. So to provide that, so to avoid that, we have to support this young generation and come in block and support the young generation. Arhan, Zaid Lefty and other like batters and bowlers who are doing very good job. I have seen a lot of in block in this part of the world, even in the North Kashmir areas. So these sponsors need to come forward and support them, because this is the high time to save our future generation. That's the only way we can be rest assured that our cricket is in safe hands. The way we saw the Kulgam boy making a mark at the Indian Premier League, that was Rasik Dar. And then talking of the North Kashmir's Aqib Nabi also making a mark there. They were recently playing the India A side representing, and he's part of that second test again. That's a good message coming in, and we should support these cricketers. They can also come in and make a mark there. And Aqib Dar has scored 14 runs of 30 balls today, and India A is 492 for the loss of hand. Aqib is still playing. He's unbeaten in the middle. Thank you, Mohsin Saab. He's keeping records. I wasn't expecting he's following the game of cricket like this. That is so nice of Mohsin Saab, the owner of MA Interior and Exterior Designing, Bij Bihara. This is what we have in this part of the world. People loving this game of cricket. It is just like that festive time. It's like something, that second love story, Latif and Nadeem. This is the love for the game people have had in this part of the world. Nadeem, you agree? Absolutely, 100%. Because people love this game. And we have a great attendance here this afternoon to be part of the game, witnessing this young talent going all guns blazing, playing some quality shots, and sending a message loud and clear that we are here to showcase what we possess in its abundance. They're sending that alarming message to their opponent team and making a statement here, playing ruthless, flawless. It's 21 for none after 2. A good start for Zahid and the company, but need to carry on. All is well that end as well. Job isn't cut out. Nadeem into the attack. Preston to service. The captain has got the white cherry in his hand. He's going to bowl here. And it's like diamond cuts diamond. Zahid Lefty is going to the man pillar here. They will definitely try to knock him. Are they going to get rid of this man? It won't be easy to remove Zahid Lefty, but Lefty has to bat properly here.
He has to put premium on his wicket, batting with a strike rate of 200, and all eyes on this man. Side left at the moment. Here is Nadeem again. That's in the air and it flies over the infield and down to the back for the point boundary. Gonna be for a good boundary coming. Goes deep in crease and cuts hard. And finds the gap to perfection. And there it is. Jan Saab, the natural entertainer. Bashir Saab, the CEO, Imran Ganai. And the pot of Sultan Warriors. And there is a small boy, small kid, alongside the CEO of State Sports Live. And this is the beauty of multicam setup, Latif. Latif, gone are the days when there was no one to capture the moments. Nowadays we have multiple cameras everywhere. So you have to look for a cover at times, because odd moments are also being captured. And there is the big man, Manzoor Pando, not getting an opportunity with the bat. Now here's an opportunity to show something special with the ball on offer. Is he going to offer something special? Will he extract some moment there? There is going to be some purchase. Oh, there is the first one. It stays low. And Arhan is on his way back to pavilion. 27 for the loss of one. Arhan, little back away, and Nadeem Dar is having a word, telling him, don't worry, wasn't your day, but you are still a champ in making. That's what you need. This is called great sportsmanship, and this is called great athleticism. That's why Nadeem Dar is a living legend from Kulgam, telling him, don't worry, boy. And the ball didn't bounce there, using the lower trajectory. Oh, take a look again. Knocked him over, uprooting the stump, and then that brings Danish Khande in at number 3. Arhan, disgusted, isn't happy with the surface there as the ball stays low, touch low. But you, as a bowler, you got to admire your skills, Latif. You have to take the pace off, because this surface is just like that of Avantipora runway. So if you are to compete here, you got to vary it. You have to use all the instincts here. And if you're going to look at the surface that I'm going to pitch it there and it's going to do its spot, no way. But you have to make the ball do the talk. Otherwise, there is nothing in the surface. बिल्कुल आपका कहना सही है मनवर, क्योंकि गेंदबाजों के लिए यहाँ पे कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर आप सही दिशा और लंबाई के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते तो आप प्रभावित यहाँ पे कर सकते। जिस तरह से नदीम डार ने यहाँ पे प्रभावित किया, पहली गेंद डॉट, उसके बाद हालांकि चौका जरूर लगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अरहान लेफ्टी को चलता किया, वो कमाल की गेंद थी। पीछे हटे थे, वहां पे अरहान कट करना चाहते थे, लेकिन मुकम्मल तौर पे गेंद की लाइन को चूके स्ट्रोक के लिए जगह बना के निकालना चाहते थे वहां पे गेंद को, और मुकम्मल तौर पे गेंद की लाइन को चूके और गेंद सीधे जाके स्टम्प्स पे लगी। नदीम डार को वहां पे सफलता मिली। कुल मिलाकर 27 एक विकेट के नुकसान पे मोहसिन साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए बीए के ऑनर, बिलीवर एथलेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऑनर हैं। बेहतरीन बल्ले अगर हम बात करेंगे बीए के, बेस्ट क्वालिटी के बल्ले आपको मिलेंगे। फिलहाल उसके ओनर मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महराज साहब जो हैं उसके ओनर हैं, और जो कि अब यहाँ से मैन ऑफ द मैच जो भी बल्लेबाज आएगा तो उसको बल्ला जो है वो दिया जाएगा उनकी तरफ से, महराज साहब की तरफ से, जो कि बीए के ओनर हैं, इन्हें बिलीवर एथलेटिक्स के। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट को तरजीह देने के लिए, क्रिकेट को उरूज तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टेप उठाने के लिए आपका धन्यवाद, इसके लिए हम सराहते हैं आपको। और उसके साथ साथ ऑनर जो है बीए के, उनको भी हम सराहते हैं जिस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये काम जो है उन्होंने करना शुरू किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की और यूथ को लाना चाहेंगे, और ख़ासकर जो नीडी पर्सन है जिनके पास उतना खास है नहीं है घर में, जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना ताकि उनका भविष्य बने, क्योंकि क्रिकेट में भविष्य है आजकल हर किसी के लिए। अगर वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है तो निश्चित तौर पे उनके लिए भविष्य, उनका भविष्य बनाने का वो प्रयास करें। जिस तरह से मनवर ने भी यहाँ पे कहा कि बच्चों को ड्रग्स से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव मैं यहाँ पे समझता हूँ। क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस प्रकार का जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो उससे हमारे बच्चे जो हमारे यूथ जो हैं काफ़ी ऊपर जाएंगे, तो उनका भविष्य जो है वो सुधर सकता है। 31 एक विकेट के नुकसान पे डी किरण सकिया, अरहान लेफ्टी वापस लौट चुके हैं। नदीम डार को मिली है वो विकेट, कमाल की गेंद थी नदीम डार की। नदीम भट्ट फिर से आएंगे अपना दूसरा ओवर डालने के लिए। 3 के बाद 31 एक विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर पारी का मुकम्मल। जाहिर लेफ्टी 18,
दानिश ठीक है, अभी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 4 रन बना के खेल रहे हैं। जाहिद लेफ्ट टिप के ऊपर काफी निगाहें हैं यहाँ से डीटी के टीम के कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, और फ्रंट पोर्ट पर निकले, स्टम्स को कवर किया, सीधे बल्ले से गेंद को हाफ वाले पे लेकर ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जा रही, 1 रन के लिए, 1 रन के साथ 32 टीम की कोट रन ने किया। 1 विकेट के नुकसान पे 212 चाहिए, अभी भी 101 गेंद मुकाबला जीतने के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन नामुमकिन कतई तौर पे क्रिकेट की भाषा में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आसानी के साथ रन नहीं बन सकते, आसानी के साथ रन बन सकते, लेकिन उसके लिए एक अच्छी साझेदारी, बेहतरीन साझेदारी के साथ साथ बेहतरीन भागीदारी यहाँ पे बनानी होगी दानिश डीके यानी डीके को, और उसके साथ साथ जाहिद लेफ्टी को। जाहिद लेफ्टी टीम के कप्तान, क्या कप्तान बड़ी पारी, आज क्या शत की पारी खेलने में वो कामयाब होंगे, ये देखना होगा। माय गुडनेस, कमाल की गेंद अंदर की ओर आई, कांटा बदलती हुई, खड़े के खड़े डीके रे, नदीम बाज, कमाल की गेंद, सीम के सहारे गेंद को अंदर की ओर लाया, मुकम्मल तौर पे डीके के चारों खाने चित, आप देख सकते, कमाल की गेंद और बेहतरीन गेंद है, मौके पे गेंद की लाइन को चूके मुकम्मल तौर पे बीट हुए, थोड़ा सा बल्ला जो है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, और गेंद जो है पड़ने के बाद जिस तरह से कांटा बदलती हुई अंदर की ओर आई, ये एक कला है नदीम बाग के पास, बेहतरीन गेंद और उम्दा गेंद पे एक बड़ी विकेट डीके की यहाँ पे मिली है, डीके की नदीम। Absolutely cross seam delivery from Nadeem Butt, hailing from Tankipura, District Kulgam, and this group, so many players from District Kulgam are absolutely bound together to put a performance for VSG. They are putting a performance. Look at that, 100 deliveries, 212 runs. They have an upper hand on the driver's seat straight away. 2 huge wickets in the form of Arhan. Now DK, bulk of the scoring in this tournament done by those two, along with Zahid Lefty. Zahid Lefty is still there. He has that metal in him to prove yet again that he belongs at the top. John Saab is on your screens, the man who is in the control room, doing what John Saab does the best, entertaining the people there. So coming back to game, Rahib, also he has been one of those scorers who has been consistent. Can he bail them out? Can this partnership bail them out from an absolute rut at this point of time? Required run rate absolutely skyrocketing, 12.79 now. Remember, it began with 12 and now almost 13. Jan Saab, a smile on his face, you can see, with a walkie-talkie in his hand, delivering a message or a two. Salman with him, Imran Ganai, the man there, along with Bashir Saab and his son. And now Zahid Lefty wanted to flick that ball, not getting the good part of the bat, hitting his pad there, and leg byes is what the signal is. Bat is he actually a run from the bat, beg your pardon there. Rahib back on strike, runs coming in singles in this. Oh, short pitch delivery, hurries him there, and almost caught him in no position whatsoever, and a single is all they would get. Singles. Look at that pace on show there for Nadeem Butt. First bowl that cutter, cross seam delivery, and now that pacey delivery to catch him off guard. Oh, Lefty wanted to go for it, but not to be for him. A stifle appeal from the wicketkeeper Danish Muzaffar there. Nothing on that. End of over number 4, 35 for 2. We have our with us Mr. Mohsin Saab, the owner of MA Interiors and Exterior Designing, hailing from Bijbrara, all the way coming here. Every day I see him coming all the way from 6 kilometers, and here he is again. And today he is making an announcement. He has that board towards that long off region. If you hit that on the full, that is if you hit a flat 6 and it touches the board,
you are going to get 1,000 rupees from him. No matter how many times you do it on a day, he is going to give the cash. This is the initiative we want every now and then. We want people like him to step in and encourage people to play this game. Oh, Nadeem Dar there again. Lights it. This time bowls slower. The wily customer Nadeem Dar, hailing from Ashmichi, cousin of Mr. Rasik Salam. He is his mentor as well. And the class of the man started as a fast bowler. Nadeem Dar was one of the brilliant all-rounders of district Kulgam. He still is, but that pace has gone down. But the wicket-taking ability has not gone one bit away. Look at that, turning and almost taking that off stump. This time Rakib breaks free, hits it over the covers and goes for a boundary, much needed boundary for DD. They were going in a shell and breaks the jinx, does Rahib, and earns his team a much needed 4 there. With this 4, 39, slowly but steadily, the runs are coming for DD. This time short pitch delivery, nothing delivery that, and it has been dispatched toward the covers. We will wait for the umpire signal. Looks like it has done the distance. Yes, it has. The signal comes from Arif Chotu, and this is turning out to be a one heck of a over for DD. Already 11 runs from that over. Hits it again and hits it for 4. 3 boundaries on the trot, and the momentum is shifting now. Commentators curse coming to 4. Nadeem Dar leaking runs, and DD are finding their feet finally, getting back-to-back boundaries there. Look at that. 14 runs so far from this one. Lost delivery coming up. Rahib off the back foot. Just sloppy from Rahi there. Ishtiaq misfields it, but without any trouble. The score remains 49-42 with 1 over to go in the power play. Are they going to score that 60? Remember, VSG were 63 in the power play, and they are still catching up. RDD 90 deliveries for 195 runs, almost 13 runs from the over. It is still gettable. Nadeem Bhatt already a wicket to his name. 2 overs, 10 runs, and now here he comes for the third. In this absolute humid conditions, never easy to bowl 3 on the trot, but the temperament of the man, he comes, runs and bowls and takes wickets in Balak. Latif will take you through. बहुत बहुत शुक्रिया। 49 2 विकेटों के नुकसान पे नदीम और बराबर 5 ओवरों का खेल मुकम्मल। जाहिर लेफ्टी के लिए पहली गेंद बेहतरीन गेंद मिडल और ऑफ स्टंप के आसपास आ रही थी, फ्रंट फुट पर आए, सीधे बल्ले से हाफ वाले पे लेके ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जावेद छड्डों की ओर। जब तक वो गेंद को फील्ड करते 1 रन और जोड़ते हुए खाते में, इस 1 रन के साथ टीम के रत किया 50 पे पहुंच चुकी है, तो विकेटों के नुकसान पे आ रहा लेफ्टी और उसके साथ साथ डी के वापस लौट चुके हैं। 2 झटके भी तक लगे डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को लेकर इस बार सीधे बल्ले से, हालांकि खेला जरूर था मिड ऑन पे, फील्डर डिशाइन थ्रूस और आता हुआ 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे की मांग होगी? नहीं, चौके का यहाँ पे चौका गया है ओवर थ्रू की सूरत में। अगर डायरेक्ट यहाँ पे लगती तो यहाँ पे फंस सकते थे बल्लेबाज, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। तो कुल मिलाकर इस गेंद पर देखना होगा अंपायर का क्या इशारा आएगा। चौका यहाँ पे आता हुआ, तो चौके के साथ टीम के रन संख्या 54 पे जाके पहुंची है। 2 विकेटों के नुकसान पे लंबा खेलना होगा जाहिर लेफ्टी को अगर इस मुकाबले को जीतना है। डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को अगर 245 तक उन्हें पहुंचना है, लक्ष्य तक अगर आपको पहुंचना है, तो फिर यहां से कुछ अलग सोच विचार के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और राहिब 20 पे, जाहिर लेफ्टी 21 पे, ऑफ स्टंप से बाहर शॉट ऑफ लेंगे गेंद गोल्डन स्पॉट पे गिरने के बाद और ऊपर उठी, हालांकि कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था वहां पे बल्लेबाज, गेंद को सीधे बल्ले से उड़ाना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तौर में। राहिब और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एक बाएं हाथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिलहाल एक अच्छी जोड़ी क्या यहाँ पे बन पाएगी?
टीम डिजाइनिंग ड्रीम्स के लिए और ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की ओर निकलते हुए मुकम्मल तौर पे बीट हुए वहां पे बल्लेबाज फिर से एक एक डॉट से अतिरिक्त दबाव आएगा डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम के ऊपर। और जितना यहाँ पे आप डॉट खेलोगे उतना दबाव अवश्य आपके ऊपर आएगा। न केवल आपके ऊपर वो दबाव आएगा बल्कि आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर भी दबाव आएगा, क्योंकि उनके पास मौका ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर उन्हें खुल के स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे में फिलहाल पावर प्ले में उतना फायदा नहीं उठा पाए डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम। इस बार खूबसूरती के साथ कवर पे फील्ड लाजवाब प्रयास, पंजू के बल उछलते हुए शायद जुनैद वहां पे नजर आ रहे हैं। कमाल का प्रदर्शन, पंजू के बल उछलते हुए 30 गज दायरे के अंदर कैच को लपकने का प्रयास, कैच वहां पे ड्रॉप हुआ। ये आप देख सकते हैं, कमाल का प्रयास में ड्रॉप पे आसान नहीं रहता है इस कैच को लपकना, लेकिन भरपूर प्रयास किया गया। तो 100 में से 100 देना चाहूंगा मैं यहाँ पे फील्डर जुनैद को, जिसने एक बेहतरीन एफर्ट्स यहाँ पे लगाए, बेहतरीन वहां पे जंप किया था लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। और ऐसे एफर्ट्स से आप मुकाबला जीते हैं। लेकिन लेकर रफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन शॉट बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर जरूर थे, उन्होंने प्रयास बढ़िया किया था। फुल लेंगे ड्राइव अपने दाहिने ओर लगाई थी गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद चलेगी डीप पॉइंट क्षेत्र में, एक रन के लिए 6 के बाद 57, 2 विकेटों के नुकसान पे 187 रन चाहिए 84 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए। मुश्किल, लेकिन अब आपके कतई तौर पे क्रिकेट की भाषा में नहीं, आसानी के साथ आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन पावर प्ले में जिस प्रकार का लाभ आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आपने 9.5 के औसत से पावर प्ले में रन बनाए, पावर प्ले में तकरीबन 11-12 रन अगर प्रति ओवर आते तो फिर बेहतर रहता इन दोनों बल्लेबाजों के लिए भी, आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी। डिजाइनिंग ड्रीम्स की अगर बात करेंगे, हालांकि भविष्यवाणी नदीम उज़्ज़मान ने की है कि डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम शायद इस मुकाबले को जीतेगी। क्या उनकी भविष्यवाणी काम में आएगी वो अंत में हमें पता चलेगा। फिलहाल इस मुकाबले में अपना दबदबा फिर से कायम रखती हुई वैली स्टार्स गांदरबल की टीम, ये तीसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं आपसे। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग लक्टीपोरा एडिशन सेकंड वर्ष 2026 का। अभी तक 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वैली फ्रेश कोल्ड चेन ने जीत हर जीत की, उसके बाद सुल्तान बारिरुस बारामुल्ला, 2 टीमें फिलहाल क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। अब आज जो टीम जीतेगी वो तीसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। जावेद जड्डू को लेकर आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्टंप से बाहर, हालांकि टिप्पा खाने के बाद काफी घूमी गेंद, मिडिल स्टंप के आसपास गेंद को टिप्पा खिलाया था, हालांकि बल्ला जरूर चलाया था, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे राहिब, लेकिन मुकम्मल तौर पे बीट हुए। वाइट का इशारा त्रिक की सूरत में एक रन और जोड़ते हुए खाते में 59 टीम के रन से गया, 2 विकेटों के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ एक और गेंद लेकर इस बार फंस गए। क्या नजदीकी मामला, जी हां, उंगली फजा में अंपायर की बिल्कुल स्टम्प्स के सामने, उनका दाहिना पैर नजर आ रहा था मिडिल स्टंप के सामने, नीचे गेंद काफी रही बल्लेबाज के अनुमान से ज्यादा अक्रॉस द लाइन गेंद को खेलने के मुकम्मल तौर पे गेंद की लाइन को चुके, बिल्कुल यहाँ पे स्टम्प्स की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, और टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं, सीधी रहती हुई गेंद जावेद जड्डू को, जिस कार्य के लिए यहाँ पे नदीम डार ने उन्हें मदद किया, वो काम यहाँ पे बखूबी करते हुए आ रही है हमारे पास पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो गिफ्ट आपने दिए उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा आर्य भाई आपका। 58, कोई बात नहीं, बनाएंगे। 58, 3 विकेटों के नुकसान पे, और ये तीसरा झटका, क्या कमाल की गेंद, गजब की गेंद जावेद जड्डू की, अंदर की ओर आते हुए पूरी तरह से दोहरे बन में वहां पे बल्लेबाज पड़े। क्या खेला जाए, छोड़ा जाए, अंत में खेला, मुकम्मल तौर पे बीट हुए और गेंद पैरों पे जाके टकराए, और इस तरीके से विकेट मिला यहाँ पे। और ये तीसरी सफलता वैली स्टार्स गांदरबल के नाम जावेद जड्डू को मिली है, पहली सफलता। और जब शुरुआत में ये खुराक लेते हैं तो फिर मुश्किल काफी और खतरनाक साबित होते हुए विपक्षी टीम के लिए जावेद जड्डू, और पहले ओवर में जब ये विकेट देता है तो फिर मुश्किल होता है इनके विरुद्ध बल्लेबाजी करना। 5 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी है, कमाल के गेंदबाज, और कमाल का नाम कमाया लोकल क्रिकेट में जावेद जड्डू ने।
58 3 विकेटों के नुकसान पे 6.1 ओवर की समाप्ति के बाद 186 रन चाहिए 83 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए। अगले गेंद लेकर पीछे हटे, हालांकि दुर्घटना जरूर घटी थी वहां पे बल्लेबाज से, बाल बचे अंदर की ओर आती हुई ऑफ स्टंप के नजदीक से। एक और विकेट, नजरे हटी, दुर्घटना घटी, एक और विकेट, ऑफ स्टंप पर गेंद सीधे जाके लेकिन प्लेड ऑन। यहाँ पे बल्लेबाज हुए, आते ही चल पड़े वापस। वो कहानी आपने सुनी होगी, तू चल मैं आया, ये आप देख सकते होंगे। प्लेड ऑन हुए, अंदर की ओर गेंद आई, सेकेंड होके, जैसा कि मैंने कहा आपको, जावेद जोडू को जब शुरुआती ओवर्स में विकेट मिलता है तो फिर एक और खतरनाक साबित होते हैं विपक्षी टीम के लिए। दूसरी सफलता जावेद जोडू के नाम, 2 बैक टू बैक विकेट्स वो ले चुके हैं। पहला लेग बाइज की सूरत में, दूसरा यहाँ पे प्लेड ऑन की सूरत में मजबूर किया वहां पे बल्लेबाज को शरीर से दूर बल्ला चलाने के लिए। वही किया बल्लेबाज ने, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेते हुए गेंद सीधे जाके लेग स्टंप पे लगी और इस तरीके से संकट में पूरी तरह फंस चुकी है अब दलदल में डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम। अब उनके लिए ये मुकाबला जीतना थोड़ा सा कठिन होता हुआ, मुश्किलात में वृद्धि होते हुए फंसी हुई नजर आ रही है डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम। आसान नहीं है वैली स्टार्स गांदरबल के सामने 245 रन बनाना, हालांकि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेना। एक चीज जो नदीम मेरे दिमाग से बाहर है कि एक बड़ा मुकाबला है, डू और डाई का मुकाबला। टॉस जीत के यहाँ पे अभी तक जो 3 बार टॉस हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए, जो 3 बार टॉस हुए, तो वहां पे कप्तान ने ज्यादा प्रेफरेंस दी चेज पे, तो उसी के चलते यहाँ पे फंस गए। एक और विकेट, हैट्रिक जावेद जोडू के नाम, शायद पहली हैट्रिक, कमाल की, शायद दूसरी हैट्रिक नदीम से जाने का प्रयास करेंगे। नहीं, पहली हैट्रिक जावेद जोडू के नाम। क्या कमाल के गेंदबाज, पहले ये दूसरी विकेट लेग बाइज की सूरत में उन्होंने चटकाई। और MA इंटीरियर की तरफ से, मिस्टर मोसी साहब की तरफ से उन्हें 1000 रुपए मुकाबले की समाप्ति के बाद उनको दिया जाएगा। मोहसिन भाई, जी हाँ बिल्कुल, जावेद जोडू ने हैट्रिक यहाँ पे ली और मोसी साहब का मानना है कि उन्हें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 1000 रुपए जो है नकदी कैश दिया जाएगा जावेद जोडू को। क्यों ना दे, क्योंकि कमाल के गेंदबाज है और जावेद जोडू एक ऐसे गेंदबाज है, मात्र ऐसे गेंदबाज जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज जो है वो भी चूकते हैं इनको खेलने में, उस प्रकार के ये गेंदबाज है। फिलहाल हैट्रिक उनके नाम, पहली हैट्रिक इतिहास रचा है जावेद जोडू ने पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग लक्टीपुरा एडिशन वर्ष 2026 में। कमाल की गेंदबाज है जावेद जोडू और किस प्रकार से उनकी गेंदें घूमती हैं। और नदीम अगर बात करेंगे, पिच में कुछ खास मदद नहीं है गेंदबाजों के लिए, लेकिन जब आप सही दिशा, सही लंबाई के साथ गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप की गेंदबाजी में निखार आता है। जिस तरह से जावेद जोडू ने यहाँ पे किया, सही स्पॉट को पिक किया और 3 बैक टू बैक विकेट्स यहाँ पे निकाले, हैट्रिक लेने में कामयाब। और इस हैट्रिक के बारे में नदीम क्या कहना आपका? Colossal moment for Javed Jodu. What an amazing talent he is, and showcasing the talent in this tournament, picking up a hat-trick, first to do so, and designing dreams. Their dreams are shattering in the middle with that 3 for Javed Jodu. Now looks like the doom is near, looks like the exit from this tournament is near, but who knows, is there a surprise, is there a twist in the tale? अट्ठावन पे 5वां झटका लगा है और योजनाबद्ध तरीके से डिजाइनिंग ड्रीम्स को इस मुकाबले से बाहर किया जा रहा है। वैली स्टार्स गांदरबल की टीम के प्रति जावेद जोडू एक और गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद, नीचे रे, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, दानिश के दस्तानों में गेंद सीधे चली गई। इस गेंद पर कोई रन नहीं। दानिश मुजफ्फर विकेट कीपर के बोमे का आज निभाते हुए जावेद जोडू कुल मिलाकर एक और गेंद डालने के लिए तैयार। 6.4 ओवर की गेंदबाजी, अगली गेंद लेकर इस बार फिर से पैरों पे लगी, क्या नजदीकी मामला, जरूर नीरोल से नीचे जाके गेंद लगी।
इस बार इम्पैक्ट जो था आउटसाइड ऑफ था, ये यहाँ पे दिखाते हुए अंपायर, जहां बिल्कुल इम्पैक्ट जो था आउटसाइड ऑफ था। बाल बाल बचे इस गेंद पर। नए जो बल्लेबाज भी आए, ये जरूर रिप्लाई में हम देखना चाहेंगे। इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। जावेद जुड्डू ने जोरदार अपील की थी और अंपायर ने वहां पे सर हिलाया, कहा कि नॉट आउट। 58 विकेट के नुकसान पे 6.5 के बाद दानिश फिर से तैयार हो रहे अगली गेंद का सामना करके। इस बार क्या फंस गए, जी हाँ, लीजिए एक और विकेट। और मुकाबले का पासा जावेद जुड्डू ने पलट दिया। कमाल की गेंदबाजी, नक्शा ही बदल दिया जावेद जुड्डू ने। छठा विकेट, छठे विकेट का पतंग मनवर हवा में उड़ता हुआ। 58 पे ये छठा झटका। What a day Judu is having with the ball. He's going to take away 1,000 from Mohsin Sab, the CEO of MA Interior and Exterior Designing Beach Bihara. That's a great message. I think this is what we need in a longer run. Believe me, we need to support this younger generation. And Nadeem, alongside Latif, believe me, we need to take care of this generation. You know, as a nation, as a community, we need that strong back from everyone. As this nation, this community has faced a lot of troubles, believe me, in a day in, day out. I hope that this generation will prosper with the passage of time. I want to see Kashmir doing wonders in everywhere, in every nook and corner of the globe. Well, back to the game again. We have a couple of advertisements going on. So take a look, and these are the ad breaks for you.
We're done with Azan here. Indeed, Allah is greatest of all. 71 for 7. We are into the 9th over of the game. Nadeem Dar, the leader of the pack, is delighted. He knows that we're into the semi-finals, almost there. Just 3 wickets away. 71 on the board. Team designing dreams. This could be tight one. But he's safe. He's home. Oh, look at his figures. 4 wickets. Giving away 6 runs in a space of 9 balls. Nadeem, what a man you got in the lineup. The golden arm. Shaping for that big slog. Doesn't connect it. Not getting hold of that. Will just be one. A single is all he's going to get. 7 for 72 in the 9th over of the game. And I was surprised looking at his figures. 10 balls, 4 wickets, 7 runs. That's what cricket is all about. And Aryan is here and talking about, Latif and Nadeem. This is how it can be cruel on you on a given day. Just 10 balls. Yes. Oh, look at that one. Oh, come on, Vikas. You got to thank mighty Lord and the divine forces. You got to be thankful to the heavens. Don't know how did that miss the sticks or the stumps. And even the batter was caught in 2 minds. Nearly cuts him into half. Look, everyone is beaten. They're all beaten. Oh, that just gone through. That cuts back into the right hand. He had no answer. Believe me, that was unplayable one from Javed Jadoo. Another Kausa boy. He's from Sam Village, where from Wasim Kasur is coming. Another Kausa based a cricketer, a left-arm spinner, and a handy hitter of cricket ball. Is operating. He's got a slip in place. Fly turner for a big shot coming. And that's in the gap. Down to the long on boundary for 4. Nadeem has changed his position. Has he saved that one? We'll have to wait and watch. Waiting for the umpire signal. Now signal the boundary. 80 for 7. After 9 overs. Jadoo finally going for a boundary. 2 boundaries in this over. And I was surprised looking at his figures. 2 overs and has picked up 4 wickets. Can't prevent that one. And it just trickle into the boundary. And this is infusing life into that. It's heart soothing here. Imran Ghana is here. His team is in the semi-finals. Seven 30. After 9-11 overs are going to come and go. What do you make of that, Nadeem? They are 7 down with just 80 on the board. Is something left for DD? I think they should try and reduce the deficit at least. Or to say the least. DD. At least try to fight it out. Oh, come on. What are you talking? In the slot for Zahid Lapti. The only hope right now for Didi is Zahid Lapti. He continues the good work he has done in this tournament throughout. And again, holding the bat. Boys, elegance all written over that shot. Look at that. You pitch it up and you go miles. That's what Zahid Lapti does. Both with the ball as well as with the bat in hand. Panchal Group, Champions League, edition 2nd. Reaching towards the business end this tournament. Last quarter final tomorrow. It is going to be Kawal Tigers. Parvez Rasool is going to be in action with Amir Monga, CyberX Strikers. That promises to be a thriller. I promise you this. If you want to watch any of the quarterfinals out of the 4, that is the one. Mark your calendars. Tomorrow at 2 p.m. we will be with that quarter number 4. Semi-finals on Monday. 2 semi-finals on Monday. We will take a break on Tuesday and we will come back with the finals on Wednesday. So far, so good.
Zahid wanted to go again, not to be single. And Vikas is back on strike. No, too much to do. Nadeem Daha, last ball of the over, and it goes one bounce straight to the fielder. Single again. खूबसूरती के साथ जाहिद लेफ्टी ने उठा दिया है गेंद, एक बाउंस के साथ पहुंची वाइडिश स्वीपर कवर क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ से फील्डर गए, जब तक वो गेंद को उठाते थ्रू करते एक रन और जुड़ते हुए खाते में 91 7 विकेटों के नुकसान पे 7.5 ओवर की समाप्ति के बाद विकास 11 पे, जाहिद लेफ्टी 39 पे 20 गेंदों का सामना करने के बाद नदीम डार एक और गेंद लेकर इस बार काफी ऊपर हवा में चली गई है गेंद, क्या पीछे फील्डर पहुंच पाएंगे? गजब का कैच, लपक लिया वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, उम्दा कैच, शायद कैच ऑफ द मैच, इज इट राइट नदीम? शायद कैच ऑफ द मैच हम कह सकते हैं। बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर 1 फीट शायद 1 कदम अंदर इस कैच को लपका गया जुनैद द्वारा। फिलहाल उसको चेक किया जा रहा है, क्या सफाई के साथ वहां पे कैच को लपका गया, क्या पैर सीमा रेखा से लगा तो नहीं उस चीज के पीछे। फिलहाल टीवी अंपायर उस चीज को चेक कर रहे हैं। काफी ऊपर हवा में गेंद चली गई, ऊंचा लेफ्ट स्ट्रोक खेलना चाहते थे। नीचे फील्डर वहां पे नजर आ रहे हैं जुनैद। अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, और संतुलन बिगड़ा नहीं वहां पे फील्डर का जुनैद का, और उन्होंने इस कैच को लपक लिया। इस तरीके से 8वें विकेट का पतंग हवा में उड़ता हुआ 8वां झटका लगा है। डिजाइनिंग ड्रीम इसके टीम को 91 पे 8वां झटका, 10 ओवर पारी के समाप्त। और अभी भी अगर हम बात करेंगे जाहिद लेफ्टी शायद पछता रहे होंगे कि क्यों टॉस जीत के मैंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, क्यों मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इस मुकाबले को क्यों खुद हाथ से फिसलने दिया। बार उल्टा बल्ला चलाया था जरूर रिवर्स के अंदाज में, गेंद को खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे बीट हुए, गेंद पैरों से जाके टकराई, इस गेंद पर कोई रन नहीं। जावेद जड्डू एक युवा गेंदबाज, और आज 1000 रुपए मोहसिन साहब की तरफ से उनको दिए जाएंगे। एमए इंटीरियर एक्सटीरियर बिजबियारा की अगर हम बात करेंगे उसके ऑनर हैं मोहसिन साहब। अगली गेंद को खेला खूबसूरती के साथ ऑन साइड में घुमाया, आदिल गुलडान पीछे डीप मिड विकेट क्षेत्र में, जब तक में गेंद को फील्ड करते एक रन और 92 8 विकेटों के नुकसान पे 10.2 के बाद अजनैन और उसके साथ साथ जाहिद लेफ्टी। टीम के कप्तान क्या करे, एक छोड़ पे अंतराल के बाद विकेट्स गिरते चले गए और एक छोड़ जाहिद लेफ्टी ने संभाले रखा। बेहतरीन प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे खड़ा किया है वैली स्टार्स गंदरबल के टीम ने। अगले गेंद अंदर की ओर आते हुए बैकफुट पे जाके गेंद को हल्के से टैप किया, स्लिप कॉर्डर में वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। इस गेंद पर कोई रन, जावेद जड्डू अपना 3रा ओवर डायरेक्ट, क्या स्पेल गया है। 2.3 ओवर की गेंदबाजी, क्या 5 विकेट हॉल अपने नाम करने में कामयाब होंगे। पहले ऐसे मातुर गेंदबाज बने पंचाल ग्रुप चैंपियंस लीग में जिन्होंने इतिहास रचा, और हैट्रिक आज ली है जावेद जड्डू ने। कमाल की गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी जावेद जड्डू ने आज की है। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 12 रन, कोई मेडन नहीं और 4 विकेटें आज उन्होंने अपने नाम की। कमाल की गेंदबाजी जावेद जड्डू द्वारा। एक और गेंद लेकर ऑफ स्टंप से बाहर थी, पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद को निकाला डीप पॉइंट क्षेत्र में, उस और फील्डर दूसरे रन की मांग, और यहाँ पे दूसरा रन पे मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हुए जाहिद लेफ्टी और अजनैन। हालांकि जावेद जड्डू वहां पे खफा नजर आ रहे हैं। इस गेंद पर 2 रन, 95 8 विकेटों के नुकसान पे 10.5 ओवर की समाप्ति के बाद जाहिद लेफ्टी 42 पे, अजनैन 1 पे 2 गेंदों का सामना करने के बाद
अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से जावेद जुड्डू और बाएं हाथ के बल्लेबाज फिलहाल बेहतरीन खेलते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने। अंतिम गेंद इस ओवर के फ्लाइट दे, इस बार गेंद को जरूर उठाया, हवा में गेंद एक बाउंस के साथ जुनैद के पास पहुंची। जब तक वो गेंद को फील्ड करते, मिड ऑन क्षेत्र से लॉन्ग ऑन से भाग के आते, गेंद को फील्ड करते, 1 रन और इस 1 रन के साथ 96। 11 के बाद 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 148 चाहिए 54 गेंदों से अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। यह मुकाबला अब धीरे धीरे हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। डिजाइनिंग ड्रीम्स के टीम से फिलहाल अजनैन और जाहिर लेफ्टी के जोड़े मैदान पे, यहां आप देख सकते होंगे इश्तियाक रॉबी। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जगह बना के खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा से बाहर, जाहिर लेफ्टी के बल्ले से चौका। शानदार स्ट्रोक इस बार आया जाहिर लेफ्टी के बल्ले से, खूबसूरत चौका। चौके के साथ 100 का आंकड़ा छू लिया डिजाइनिंग ड्रीम्स के टीम ने। 47 पे जाहिर लेफ्टी पहुंचे। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, बैकफुट पे जाके खूबसूरती के साथ कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से आला टाइमिंग, बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। अगली गेंद पुल किया ऑन साइड में, गेंद सीमा पार, काफी बाहर स्टेडियम से गिरी है। 6 रनों के लिए जाहिर लेफ्टी के बल्ले से एक और छक्का। पहली गेंद पर चौका और इस बार छक्का, शॉर्ट आर्म पुल, बेहतरीन इस बार खेला जाहिर लेफ्टी ने। आप देख सकते हो कि गेंद पड़ने के बाद जरूर धीमी गति से आई और तुरंत इस गेंद को परखा, भापा, कमर की ऊंचाई तक गेंद आ रही थी, ऑन साइड में गेंद को पुल के अंदाज में उठा दिया 6 रनों के लिए। 106 8 विकेटों के नुकसान पे क्लीन बोल्ड यहां पे हुए, साफ आउट जाहिर लेफ्टी। यॉर्कर लेंगित की गेंद साहिल खान की बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद आ रही थी, अक्रॉस द लाइन गेंद को खेलने गए, मुकम्मल तौर पे गेंद की लाइन को चूके और गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगी और इस तरीके से 106 पे ये 9वां झटका, 9वां झटका यहां पे लगता हुआ डिजाइनिंग ड्रीम्स के टीम को। और कमाल की गेंद, साहिल खान, यू ब्यूटी, लाजवाब गेंद, यॉर्कर लेंगित की मुकम्मल तौर पे बीट हुए बल्लेबाज। आप देख सकते हो कि कमाल की गेंद पहले पैरों पे लगे, उसके बाद स्टंप्स पे जाके टकराई और इस तरीके से एक और झटका।
वैली स्टार्स गांदरबल आसानी के साथ ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करते हुए और फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए 106 9 विकेटों के नुकसान पे 11.3 ओवर की समाप्ति के बाद। और मोहसिन भाई हमारे साथ यहाँ पे पहुंचे हैं हमारे कॉम्बॉक्स में, एमए इंटीरियर और एक्सटीरियर के ऑनर हैं और वो फिलहाल हमारे कॉम्बॉक्स में जुड़े और उनकी तरफ से 1000 रुपए जो है नकदी कैश दिया जाएगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जावेद जुड्डू को, जिन्होंने आज हैट्रिक ली। एक बड़ा शुभ काम वो करते हुए साहिल खान को मिली है विकेट 106 9 विकेटों के नुकसान पे। योजनाबद्ध तरीके से बाहर किया गया है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिजाइनिंग ड्रीम्स की टीम को। कमाल का प्रदर्शन किया आज वैली स्टार्स गांदरबल की टीम ने, एक माइटी टीम, बड़ी टीम पूरी कश्मीर घाटी में अगर हम बात करें डिजाइनिंग वैली स्टार्स गांदरबल की। कमाल के गेंदबाज हैं इनके पास और कमाल के बल्लेबाज हैं वैली स्टार्स गांदरबल के पास साहिल खान। अब उनके सामने फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज मुंतजिम बशीर स्ट्राइक लेंगे। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रहते हुए, हालांकि पीछे हटे थे, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए थे इस गेंद को मुंतजिम। बाल बाल बच्चे किस्मत के साथ ऑफ स्टंप के नजदीक से गेंद निकल गई, हवा में राइज होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार अच्छा उछाल इस गेंद ने प्राप्त किया, थोड़ा सा आगे साहिल खान ने गेंद को रखा और बीट किया बाएं हाथ के बल्लेबाज मुंतजिम, और मुंतजिम फिर से तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर खड़े खड़े खेलने का प्रयास मुकम्मल तौर पे बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के। And again, Believer Athletics coming with a bat, first of its kind in the valley. He is going to give it to the man of the match performance today. Thank you so much, Mehraj Saab, for bringing this initiative. Also, that board of MA Interiors and Exteriors Bijbrara, if you hit the 6 and it hits the board, the owner Mohsin is going to give 100 rupees for the one, in fact 1000 rupees if he hits the board. So again, there is Mr. Iqbal Saab, absolutely in the scorching sun, never easy to do your job. Hats off to Bashir Ahmad and his team, doing a wonderful job. That last pair in the middle, Aznan and Muntazim there, and Javed Jodo going to bowl his last throw. What an outing with the ball in hand for him today. 4 for 16. Flighted delivery in the slot. Hits it. Looked like the arm ball picked it, but Azlan there on strike. Javed Jodo. Flighted delivery outside the off stump. Nothing going designing dreams way today. And in the slot. Oh, he knocks him out. What a befitting end to this match. Javed Jodo picks up fiver, and well-deserved fiver for him. Designing dreams have been absolutely demolished, and the dream to qualify for the semi-final is absolutely dashed. And Valley Star Ganderbal becoming the third team to enter that semi-final round. And we will come back with the lost quarter final, and we will have the fourth team to join them. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.
Hello. Hello. Please, Amir Ganai, please listen. Come to the presentation, Amir Ganai. The one man army. The legendary of Locktipora. The Mr. Cricketer. The legends of legend. The legend of legends. Chairman of Locktipora Cricket Association. Mr. Amir Ganai, please listen. Carefully, please. My jigar Amir Ganai. Hello.
to the semi-finals comprehensively. It's time for the presentation. We have too many awards to go away. We have some of the innovative awards in the tournament. The first one, it is for Natural Entertainer. That is John Saab for you. I request Roop Malik Saab to come up, please. He will be presenting an award to John Saab, the Natural Entertainer from Pulwama. Roop Malik will be giving away that award. Is Roop Malik here? Roop Saab. Is he here? The first one this evening to go away for John Saab, the Natural Entertainer. This is an award for John Saab. And we have another award to go away that will be presented by Faizan Ahmed. It's a AD cap to Raib Shafi for his incredible 52 in other game. We forgot to give away that award to this lad for his incredible 50. Now today it will be presented to Raib. Faizan is giving away this award. Okay, thank you. Moving on, we have another award to give away. That was the Kausa boy, the golden arm. From Kausa, it is none other than Javed Jadu. My call goes to Mohsen Amir to come up, please, and he will be presenting the cash award of 1K for Javed Jadu, the owner of MA Interior and Exterior Designers, Beach Bihara. Then we have the Super Success Award, sponsored by AD Caps, to be presented by Javed Saab, the owner of Designing Dreams, Mir Bazar near NH44, for Mujibul Haq for his 8 sixes in a match. Mujibul Haq to come up, please. And you can do one thing easily, that is to make that saripop, putting your hands together. It's a Kashmiri word for cheer. Then moving on, we have the Game Changer Award, sponsored by GM and TVS Beach Bihar. It's a 500 cash award to be presented by Lal Saab, the famous cricket analyst from this part of the world, former banker, now a cricket analyst, and he's going to present the 500 cash award to Mujibul Haq for his 82 of 41 balls. Okay, thank you very much. Now we have man of the match. The last one, that's going to be the icing on the cake. It goes to Nadeem Dar. It will be presented by Ashu Kashmiri, the manager of their side. Ashuji will come up and he will be presenting a kit sponsored by Kamal Spices, Kashmir Cup Naya Saas and our own spice. And Nadeem will stay here because Mohsen Hamid will be presenting a bat from BA, which is Believer Athletics, to go with it, thanks to Marai Saab, the owner of BA Athletics. So that's it we have for you from today's presentation. We will be back tomorrow afternoon with the fourth and the last quarter final. Till then, it is Assalamu Alaikum and Fi Amanillah from our side.